they will be winning today because their men's team actually won yesterday. I have Rutuparna and also Abhilasha alongside with me. Rutu, any pressure that your men's team are already won yesterday? Today you have to win, something like that? No, absolutely not. Actually, it's just a big motivator for us to push ahead and win for us too. Oh, lovely. And how was the situations yesterday? Because I saw the men's actually went into the third set as well, the third match as well. And did it go to the third set or was it two sets straight? No, the doubles was a two-set straights, but they have very interesting matches. I think all the matches were very nail-biters and you really enjoyed it. Oh, fabulous. So, Rutuparna, what's your call now in the men's singles? So, will you be playing the first game or the second game? I'm sure you're playing the second game. Yeah, I'll be playing the second one. Okay, lovely. Second match, we can see Rutuparna. Abhilasha, right. Well, so, how was your day yesterday with the men's? Celebrated yesterday nicely with the victory. Today, some pressure on you to, like, you have to win it, something like that? No, as she said, it was a motivator because we saw the guys' intensity and we want to put the same thing on the court today. What did the guys actually speak to you and say, okay, listen, we have won, so you guys go out there and just make sure you also win? What did they actually speak to you or anything on the think tank discussion with your coach? No, nothing like that. They're just motivating. They don't put pressure on us. Lovely. All the very best. So you're playing the first match. Fabulous. Right. All the very best, Rutuparna and Abhilasha. Do well. Do well. Lovely. And to my right, I have Nancy Malik. Nancy Malik alongside with me. आप ऐसे खड़े हो जाइए. ऐसे 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 कैमरा के लिए. Yes. ऐसे मुड़ जाइए. Right. वो जब अनाउंसमेंट खत्म हो जाएगा आपका सवाल मेरा सवाल आपको सुनाई देगा. एक मिनट. Right. There's the announcement that's happening on the ground. Like, there we go. Right, Nancy Malik. So, आज पहला मैच आपके लिए कैसे तैयारी है? लखनऊ के बारे में क्या बोलना चाहते हैं? रोहतक से आप आए हुए हैं, तो कैसे लग रहा है लखनऊ पहले? लखनऊ काफ़ी अच्छा है, घूमने में काफ़ी मज़े आ रहे हैं, सब कुछ मैनेजमेंट वगैरह बहुत ज़्यादा अच्छी है। सही है, सब रटा हुआ बोल दिया, अब जो रटा नहीं है वो बोलो। नहीं बोला, मैंने अपने मन से बोला, दिल से। मन से बोला है। खेल रहे हैं, आप खेल रहे हो या वो खेल रही हैं? ओके, क्या प्लान्स है अभी इनके खिलाफ? क्या कल का मेंस का मैच कुछ देखे उनके? नहीं, हमने मेंस का मैच नहीं देखा। ओके। हाँ जी, प्लान्स हम ऐसे डिस्कस नहीं कर सकते हैं ना लाइव। नहीं बोल सकते, कान में बोलो मेरे, मैं नहीं बोलूंगा उनको। कान में अब तो सुनाई देगा ना, माइक आपने मेरे सामने कर रखा है। आई वांट टू नो व्हाट इज आपका स्ट्रैटेजी क्या होगा? मतलब लॉन्ग पासेस या क्रॉस कोर्ट या आपको नेट से ज्यादा खेलना पसंद है? आपको क्या पसंद है? हमें कंसिस्टेंट खेलना है। ओके ओके, लेकिन पसंद क्या आपको ज्यादा? मेरे को शॉर्ट एंगल्स काफ़ी पसंद है। लवली लवली, वेरी गुड। एंड आई आल्सो हैव मुस्कान। मुस्कान, आप बताइए लखनऊ आपके लिए कैसा था? और कैमरा के लिए आप फेस हो जाइए ऐसे, तो आप बताइए लखनऊ कैसा था आपके लिए, अभी कैसा लग रहा है? लखनऊ अच्छा है, मतलब अच्छा मैनेजमेंट किया है, मतलब ऑफिशियल वगैरह काफ़ी अच्छे हैं, मैनेजमेंट टोटल ओवरऑल अच्छा है। सही है। और उनके खिलाफ अभी आपका स्ट्रैटेजी, आपने तो बताया टाइट खेलना है, लेकिन कैसे टाइट, मतलब वो थोड़ा बोल दीजिए। वो बता नहीं सकते, पहले मैच से पहले, वो मैच के बीच में ही वो होता है। मैच है। से पहले बता नहीं सकते। बता नहीं सकते, उनके कोच ने बोला है बताना नहीं है कैमरा में और माइक में। नवीन शोरी पूछे तो बिल्कुल नहीं बताना है ना, ऐसे बोल के रखा है। चलो मैच में देखेंगे। है ना, वो तो अपोनेंट के ऊपर है। ओपोनेंट के ऊपर भी है। सही है, सही है। वेरी गुड, थैंक यू सो मच, डू वेल। एंड दैट इज द रोहतक टीम देयर, द एमडीयू यूनिवर्सिटी। वी विल गेट टू द मैच वेरी सून एंड आल्सो ओवर टू द कमेंट्री बॉक्स वेयर ऑफ कोर्स दुष्यंत सिंह एंड महेश तिवारी आर वेटिंग फॉर अस। नमस्कार, धन्यवाद नवीन। और जिस तरह से कि यहाँ पर बात हो रही थी, जिस तरह से नंसी मलिक से उन्होंने बात की और जिस तरह से अभिलाषा से बात की, तो दोनों ही टीम के खिलाड़ी जो इस समय हैं अपने अपने प्रदर्शन को लेकर बहुत उत्साहित हैं और अपने जो सीक्रेट्स हैं रिवील नहीं करना चाहते। खेलो इंडिया ये तीसरे खेला जो खेला जा रहा है यहाँ पर लखनऊ में लॉन टेनिस के अंतर्गत, आज का दूसरा दिन। और आज के दूसरे दिन जो पहला मुकाबला यहाँ पर खेला जाने वाला है, दयानंद यूनिवर्सिटी की नंसी मलिक जो मुकाबला करेंगी यहाँ पर कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी यानी KAIT की अभिलाषा बिष्ट के साथ। और जहाँ तक कलर का सवाल है, नंसी मलिक जो लाल कलर में यहाँ पर नज़र आ रही थी और अभिलाषा बिष्ट जो कि ब्लू कलर में है, तो इनके बीच का ये दो मुकाबला यहाँ पर होने जा रहा है। और इस बीच मैं स्वागत कर रहा हूँ हमारे साथी कमेंटेटर मेरे दोस्त दुष्यंत सिंह जी का। स्वागत है। गुड मॉर्निंग दुष्यंत। Good morning, Mahesh. What a lovely day in Lucknow today, with the contrast in weather that we had from yesterday, where the temperatures were hitting over 40 degrees, 42, 43, and today we had rain in the morning. And as you can see, these patches on the court, this is due to the rain which we had early in the morning. The weather's cool. We have cool breeze blowing now,
and there is definitely a lot of energy levels are much higher among the players, and definitely we're going to see some good tennis today. What you see on the screen is Nancy Malik. She's representing Maharishi Dayanand University on the red t-shirt, and she seems to be confident and she is ready to go. Both the players are just warming up, and that's what you see on the screen. She's Abhilasha Bist from Kalinga Institute of Industrial Technology. We hope to see some good tennis today, being the second day. And Mahesh, what do you feel about the organization and the way the organizers have got together and put all the courts together and seen that the matches start dot on time? बिल्कुल दुष्यंत, जिस तरह से यहाँ पर मुकाबलों का आयोजन किया गया है, जिस तरह से ये कोर्ट्स तैयार किए गए हैं, जिस तरह से सारे स्टेडियम को सजाया गया है दुल्हन की तरह, पूरे लखनऊ में इस समय अगर हम दौरा करें, घूमें, देखें, तो हर जगह खेलो इंडिया में हम हर जगह यही देखेंगे कि हर दिल में देश और हर जगह गर्व से गौरव तक की बातें लिखी हुई हैं। और जहाँ तक खिलाड़ियों का सवाल है, खिलाड़ियों ने भी तारीफ़ की है, जैसे अभी नैन्सी ने कहा और उनके साथी अभिलाषा ने भी कहा कि हम लोग बहुत खुश हैं जिस तरह से हमें सुविधा मुहैया कराई गई है और जिस तरह से खेलों का आयोजन किया गया है। तो खिलाड़ी खुद अगर संतुष्ट हैं तो मैं समझता हूं कि ये अपने आप में एक उपलब्धि होती है, अपने आप में एक रिसीट होती है कि आपने अच्छे खेलों का आयोजन किया गया है, आपके तरफ से हुआ है। और निश्चित रूप से ये खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो गर्व से गौरव तक की बात कही जा रही थी, कैपिटल ऑफ यूपी जो कि लखनऊ है, नवाबों का शहर है, वहाँ पर इस टूर्नामेंट का आयोजन हो रहा है। और बारहसिंगा इसके जो जीतू शुभमकर है, जिसे मैस्कट कहा जाता है, उसमें लखनऊ, वाराणसी, गौतम बुद्ध नगर और गोरखपुर के 4 शहरों में ये टूर्नामेंट का आयोजन हो रहा है। तो आयोजन को लेकर कोई बात नहीं है। और जो कल बारिश की बात हुई थी, आज सुबह बहुत तेज़ी के साथ भी बारिश हुई, उसके बाद हल्की बूंदाबांदी हुई, लेकिन उसके बाद भी जो कोर्ट है ये वो पूरी तरह से सूख चुका है, लेकिन थोड़ा सा डैम्पनेस जरूर होगा। क्या सोच रहे हैं आप? No, Mahesh, it's okay. These are acrylic coats and they dry up, and now I can see the weather opening up. Excellent playing conditions today for the players, because definitely in the heat it does affect their performance. Now coming back to another topic which I really wanted to discuss with you, seeing the kind of organization skills the people have put in Lucknow, the kind of infrastructure that has been done, and now as a nation, as India, when I talk about, I feel there should be observers from a lot of states who should be coming, seeing what we provide to our people in districts. And as we are going at the grassroots level, it's very important to enhance infrastructure, because accessibility is very, very important for youngsters to get to play. That's what I was discussing, that how many, it's really mind-boggling what we are seeing in Lucknow, the kind of cricket stadiums, the basketball courts, the tennis courts, the badminton complex. There's a tremendous effort put by the government. But India being such a big country with such a huge population, the infrastructure should go right at the core level, Mahesh. And what do you feel, how this can be synchronized and this entire initiative can be backed by giving more and more infrastructure? बिल्कुल दुष्यंत, सही कहा आपने। ग्रास रूट टैलेंट हंट की बात शुरू से ही की जा रही थी इस टूर्नामेंट को लेकर, इस खेल को लेकर, और मकसद भी यही था। जब इस खेल की शुरुआत हुई तो ग्रास रूट टैलेंट को पहचानना, उसे निखारना, तराशना, ये बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए जो यंत्रणा है, मैं समझता हूँ कि तमाम हमारे साई है या और भी जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, कोचिंग है, इनके ज़रिए इन खिलाड़ियों को मौका मिलना चाहिए। इन खिलाड़ियों के जो जौहर है उसे तराशने होंगे और तभी भारत को अच्छे खिलाड़ी मिल सकते हैं। फिलहाल वार्म अप चल रहा है दोनों खिलाड़ियों के बीच में। नांसी मलिक सामने वाली जो MDUI दिख रही है आपको, दयानंद यूनिवर्सिटी, और अभिलाषा ये अभी जो स्क्रीन पर आपको नजर आई ब्लू जर्सी में। तो ये जो है इन्हें नर्चर करना चाहिए। ये ना हो कि टैलेंट हम देखें उसके बाद में उन्हें वहीं पर छोड़ दें, उन्हें पूरी तरह से नर्चर करके आगे ले जाने की कोशिश की जानी चाहिए। Mahesh, there's a saying in English, talent can only take you to 3%. Talent is 3%. 97% is perspiration. It is very important to perspire to enhance your talent to the level that he or she is capable of. So for that, what I was talking about, the whole programs at every level, besides competitions, how the coaching is being nurtured, how the coaches are being nurtured,
how there is professional development in coaches. Otherwise, what happens? The thinking ability of coaches just gets stagnated, and when you get stagnated, there is a depreciation in your thinking. You actually go down. So there has to be, the line of the graph increase has to be there for coaches development, players development, best of infrastructure coming up in the country. So all these factors put together can really see that the optimum level of sports is brought in the country. बिल्कुल सही दुष्यंत, और निश्चित रूप से लेकिन बहुत सी चीज़ें होती हैं जो भारतीय जो खिलाड़ी हैं जो रिमोट एरिया से आते हैं, ग्रामीण एरिया से आते हैं, जो शहरी भागों में भी है, लेकिन आज जो सबसे बड़ा प्रश्न बना है रोज़गार का, रोजी रोटी का। तो भले ही आपको बहुत अच्छा टैलेंट हो, यूनिवर्सिटी में आप अच्छा प्रदर्शन कर रहे हो, लेकिन जब आप एक डिग्री लेकर बाहर निकलते हैं तो सबसे बड़ी तलाश जो होती है पेरेंट्स को, जो फ़िक्र होती है, वो सबसे पहले ये होती है कि मेरा बच्चा कहाँ पर जॉब करेगा, क्या कमाएगा, क्या अपने परिवार को चलाने के लिए कितना योगदान देगा। तो कितने पेरेंट्स ऐसे होंगे जो ये एफर्ट्स कर सकते हैं कि नहीं बच्चे तू खेल, हम तेरे पीछे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, ये समझने वाली बात है। हमें ये देखना होगा कि क्या हमें बच्चों को कुछ इस तरह की कोचिंग दे सकते हैं जहां उन्हें स्टाइपेंड मिले, कुछ पैसा मिले, जिससे उनका घर भी चले, उन्हें आर्थिक परेशानियों का सामना न करना पड़े, जिससे कि ये जो टैलेंट है वहीं के वहीं समाप्त करना हो जाए। क्योंकि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो रोज़ चीज़ों की ज़रूरत होती है उसे तो पूरी करनी है, और पेरेंट्स जो हमारे मिडिल क्लास से आते हैं उनकी सबसे पहली आवश्यकता यही होती है कि मेरा बच्चा डिग्री ले, उसके बाद में कुछ रोजी रोटी का प्रबंध करे, कुछ रोज़गार करे, कुछ एम्प्लॉयमेंट का कुछ वो सोचे। तो ये सोच और ये समझने में मैं समझता हूँ कि जो उम्र गुजर जाती है तो उसके बाद में फिर बहुत चीज़ें छूट जाती हैं पीछे। फिलहाल खेल शुरू हो रहा है ऐसा लग रहा है। Yes, Mahesh, very well said. Now we are about to start with the match. Malik. We have Nancy She's, Malik ready. serving Play. for Maharishi Dayanand University against Abhilasha. Both the players playing from the baseline. Playing high loops from behind, just तो आज के दिन का ये पहला पॉइंट यहाँ पर दे रही हैं नैन्सी मलिक ने, पॉइंट दिया अभिलाषा बिष्टो को, और निश्चित रूप से यहाँ पर लव 15 अपने ही सर्व पर यहाँ पर अंक गंवाया। काफ़ी दूर खेल गई थी, बेस लाइन पर जो खेलने की कोशिश की थी काफ़ी दूर चली गई थी उनकी शॉट, और उसकी वजह से अंक मिला। Out. Love 30. love 30. Ball in. फॉल्ट होता हुआ वहाँ पर लव 30। अगर पहले ही सर्व आपकी इस तरह से जा रही है तो यहाँ पर सोचना होगा नैन्सी मलिक को, क्योंकि उनके सर्व पर 2 पॉइंट वो गंवा चुकी हैं। बैक हैंड फोर हैंड, उसके बाद में काफ़ी तेज़ी के साथ वहाँ पर वो खेलने की जो कोशिश की थी डाउन द लाइन, वहाँ पर कोशिश की अभिलाषा ने, गलती कर गई, बाहर खेली, और खाता यहाँ पर अंकों का खुलता हुआ नैन्सी के लिए 15-30। Mahesh, you're noticing that both the players are playing from the baseline. They're not happy to come in onto the net. So it's going to be a long drawn out match this way. They have to move to the net in singles. And that's usually a problem with all the women tennis in the country. हो बहुत बाहर अनियंत्रित दिशाहीन, वहाँ पर बैकहैंड से रिटर्न करने की कोशिश की थी वॉली पर लेकर, लेकिन गलती कर गई, बाहर खेले, और यहाँ पर मौका मिला है अभिलाषा को एक अंक लेकर। देखिए जिस तरह से उन्होंने ये सर्दों की बैकहैंड रिटर्न आया, और उसके बाद में यहाँ भी रिटर्न अच्छी तरह से, लेकिन उसके बाद बाहर की तरफ, तो 15-40। और ये यहाँ पर गलती 30-40। बिल्कुल इत्मीनान के साथ मन मस्तिष्क को शांत रखकर खेलने की कोशिश में लगी, लेकिन एक अच्छी बढ़त यहाँ पर अभिलाषा के पास थी। कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी की ये स्टूडेंट। Nice baseline rallies. You can see Nancy. Deuce. And the ball went out. Deuce.
Both the players prefer to play from the baseline, but I find Abhilasha more stronger on the baseline. As the match rolls on, we'll see. First serve is very important, percentage of first serve. And that's a double fault. Advantage Kalinga Institute Advantage of to Technology. Abhilasha. She should take her time, not hurry up. Game Kalinga Institute of Industrial Technology. First game. यहाँ पर गेम गंवा चुकी हैं, नेट पर खेली, वहाँ पर पीछे हटकर नांसी मलिक जो कि कंट्रोल करके खेलना चाह रही थी पीछे डाउन द बेस्ट लाइन, और यहाँ पर सीधी नेट पर जाकर उलझी और पहला गेम इस तरह से यहाँ पर अभिलाषा के पक्ष में जाता हुआ 1-0 की बढ़त यहाँ पर प्राप्त कर ली है अभिलाषा ने. Mahesh, in tennis, holding your serve is so very important. Today in professional tennis, if there's a break in service, it becomes such an advantage to the other player for winning. But here, I find that the serves getting broken is so easy. We should not be the case. So we just saw that Nancy got broken in the very first serve. And now we are commencing with the second game with Abhilasha serving 1-0. Abhilasha missed the serve. बिल्कुल, सर्विस अपने आप गंवाना मैं समझता हूँ कि एक मौका होता है विपक्षी खिलाड़ी को कि वो आप पर वर्चस्व स्थापित करें, आप पर दबाव डाले, और मोस्टली हर खिलाड़ी अपने स्तर को बरकरार रखना चाहता है, पॉइंट्स लेना चाहता है. अभिलाषा यहाँ पर सर्व करती है. 15 love. And we see another unforced error by Nancy. 15 love. मौका था वहाँ पर, बहुत बड़ा लॉब दिया था पीछे की तरफ डाउन द लाइन, लेकिन उसके बाद में रिटर्न किया. उसके बाद में नेट पर जो मौका मिला था, थोड़ी सी हड़बड़ाहट जल्दबाजी में नेट पे मारने की कोशिश की थी अभिलाषा ने, नेट के पास खेलने की कोशिश की थी, नेट पर चली गई गेंद और अंक मिला वहाँ पर नांसी को. 15 ऑल. That is a weak overhead. Sorry, 15. 30-15. Abhilasha leading by 1 game to love. Sorry all. अभी तक महेश दोनों प्लेयर्स काफ़ी अनफोर्स्ड एरर्स कर रहे हैं, और नैन्सी तो एक बार भी नेट में नहीं आई है, पीछे से ही खेल रही है अभी तक. 30 ऑल होता हुआ स्कोर. बिल्कुल, अभी भी खेल शुरू हुआ है, बहुत वक्त लगता है वार्म अप होने में खिलाड़ियों को, लेकिन जैसे जैसे खेल आगे बढ़ेगा शायद कुछ और रोचकता, थोड़ा आकर्षकपना और आक्रामकता देखने को मिलेगी. 30 ऑल. 2 पॉइंट पहले आपने देखा था कि अभी अभिलाषा कैसे नेट पे गई थी. दिस इज ओके, मिस्टेक्स होएगी बट कॉन्फिडेंस आएगा. डबल फॉल्ट करके बैठ गए. 30-40. पहले 2 गेम में ही अगर ब्रेक हो जाएगी प्लेयर्स की तो ब्रेक पॉइंट है. Cheers. Deuce. मिस हिट था बट राइट आया. ये स्ट्रैटेजी अच्छी है अभिलाषा की. She moved Nancy from one part of the court to the other part, and then she saw the opening and volleyed the ball easily. That is the format of playing. You have to size the court and play it in all directions. बिल्कुल, पहले बाईं छोर पे ले गई, उसके बाद में दाहिनी छोर पर देखा काफ़ी दूर चली गई है, तो वहाँ पर तेज़ी के साथ स्मैश किया और बाईं तरफ से वहाँ पर दाहिनी छोर से गेंद को निकाल दिया, और इस तरह से ये एडवांटेज की स्थिति में पहुंची है यहाँ पर अभिलाषा. Game Kalinga Institute of Industrial Technology. Lead by 2 games to love. और ये आउट बॉल. अभिलाषा लीडिंग 2 love from कलिंगा यूनिवर्सिटी. महेश, मुझे ये प्लेयर बहुत सॉलिड लगती है. शी हैज़ गॉट गुड कंट्रोल, गुड बेस लाइन कंट्रोल, सर्व एक्शन बहुत अच्छा है, और जितने मैचेस खेलेगी उतना ही गेम उसका सेट होगा. कितना अच्छा सर्विस एक्शन है. अब आप ये देखिए, जब वो सर्विस करती है शी हैज़ टू मूव अप.
15 लव। Let Fusser. लगातार वहाँ पर फॉल्ट के जरिए, लेकिन डबल फॉल्ट नहीं हुआ इसलिए कोई अंक नहीं। और गलती हुई यहाँ पर अभिलाषा से। 15 ऑल। 30 लव स्कोर इस समय। ब्रेक पॉइंट पिछले सर्व में वहाँ पर गंवाया था नैन्सी ने। यहाँ पर उन्हें अपनी सर्व को रखना होगा, सर्विस ब्रेक होने से बचाना होगा। क्रॉस कोर्ट खेलने के लिए वक्त है, वहाँ पर हल्के से देखिए खेलने की कोशिश, लेकिन नेट पर गलती कर गई और ये जो अच्छा मौका, आसान सा मौका बना था, वो अंक वहाँ पर गंवाया नैन्सी ने। 30-15। Good morning, Mahesh. Welcome to the commentary box as well, Navin Shauri, and gathered some very intrusive and interesting information from Abhilasha. Wonderful return again, and does not get that across. Nancy Malik, she's kind of struggling this morning. Not a set victory yet, and also in this game, she's been under pressure. 30 all from Rohtak, yeah, Nancy. But I'll tell you what, Abhilasha, she's from Nepal. She is come out here in the Kalinga University setup. She's made a name for herself like this. Look at that for another lovely forehand. Beautiful work. 30-40 स्कोर। वहाँ पर गलती नैन्सी की, बैकहैंड रिटर्न। और यहाँ पर जो डाउन द लाइन, बेस लाइन पे खेलने की कोशिश की थी, नियंत्रित नहीं कर पाई। कोशिश की थी भरसक स्ट्रेच होके खेलने की। 34। बॉल बॉय। तो निश्चित रूप से अभिलाषा एक एडवांटेज की स्थिति में है, एक ऐसी स्थिति में जहां पर वो तीसरा गेम भी जीत सकती हैं। सर्विस ब्रेक किया था उन्होंने पहले सर्व में और अपने सर्व को भी बरकरार रखा था और इसके साथ किया ड्यूस। फिर मौका है यहाँ पर मलिक के पास। Yeah, the way she was lobbing the ball up in the air, it looked that Abhilasha had to go for that strong forehand and couldn't control it inside. She's got the advantage now, Nancy. All chances to win the first game for her in this set. एडवांटेज नैन्सी के पास है और निश्चित रूप से थोड़ा सा स्थिर होना चाहेंगी, खेलना चाहिए, क्योंकि 2-0 से इस समय पीछे हैं। Fault. Now she has to get that serves right. Fault. And also, no, come on, that's a double fault. Deuce. Again, it's a deuce. She has thrown away the advantage that she had got. Yeah, speaking about Abhilasha Bista. She trains in that one academy that has been affiliated to Kalinga University, the Al Tewal Academy, which is the Indian subsidiary of a German university called Alexander Vaske Tennis University, as Nancy gets the advantage now. Once again, back to her. She has to seal this. That was interesting on the return. She's made sure she wants to come in. And that's a brilliance of Abhilasha Bista. Once again, deucing it and making sure the advantage is thrown away. बहुत ही अच्छी तरह से बैकहैंड रिटर्न वहाँ पर किया था, फोरहैंड का इस्तेमाल किया और बहुत ही हल्के हाथों से खेला नेट के पास, कि समझ चुकी थी कि नैन्सी काफ़ी पीछे हैं, वो पहुँच नहीं पाएगी और यही चालाकी होती है, यही चतुराई होती है और उसी चतुराई की वजह से यहाँ पर अब निश्चित रूप से यहाँ पर 2-0 की बढ़त के बाद एडवांटेज की स्थिति में पहुँची है नैन्सी और देखना है कि क्या इस सर्व पे वो इसे फिनिश करेंगी, समाप्त करेंगी, एक गेम अपने लिए ले लेगी। पहली फॉल्ट, फिर जैसे कि हमेशा देखते आया है डबल फॉल्ट पिछले सर्व में भी उन्होंने किया था। Fourth time she's given away 4 chances to Abhilasha for making a comeback, and again she's given it away 4 times in a row. Right, and she's got the advantage and she's thrown it away 4 times.
बिल्कुल कत्ते उनके कोच खुश नहीं होंगे जिस तरह से वहाँ पर नैन्सी ने जो एडवांटेज मिला, 4 बार आपको लाभ की स्थिति में आप हैं और उसके बाद आप अगर इस तरह से अंक गंवाती हैं तो ये कत्ते ही गुजारिश उनके कप्तान को नहीं होगी, उनके कोच को नहीं होगी, क्योंकि ड्यूस पे पहुँचता हुआ स्कोर, पीछे जाकर फोरहैंड का इस्तेमाल। बहुत से खिलाड़ियों ने काफ़ी दूर तक वो लोग बेस लाइन पे ही ज़्यादातर दोनों खिलाड़ी खेल रहे हैं और यहाँ पर गलती नेट पर और फिर एडवांटेज की स्थिति जहाँ तक गलती हुई नजर आ रही है अभिलाषा के लिए। Yeah, it's that normal motion, isn't it, Mahesh, of the lawn tennis action where you are comfortable in the baseline because you don't want to give away even a single point, and then when there's a small slice that happens, a little bottom hand that happens, or even that deft touches, yeah, then you're found wanting near the net. Again, the advantage is being snatched back. Again, it's a deuce thing, and now this is the first time where Abhilasha has given away her advantage. This game is not getting over in this set. It's pulling along, they're fighting it out nicely. And yeah, as you said, those long cross courts. Yeah, there you go, wanted to slice Advantage. it, but does not find Maharishi the gap over the net. See, this is the reason. They generally like to play on the base. और जैसे ही वहाँ पर खेलने की कोशिश की, तराशने की कोशिश की, उसे नेट पर उलझ गई वहाँ पर। आप इस तरह से स्लाइस करें, इस तरह से खेलने की कोशिश करें तो नेट का ध्यान रखें जो 3 फुट ऊपर होती है जमीन से, उसके बाहर आपको गेंद को डालना है। एडवांटेज नैन्सी मलिक। Can this be her first game? Yes, it is. That's the first one in the set for Nancy Malik. Wonderful return, and the Rohtak girl will be happy. Kalinga Of Maharshi Dayanand University. leads 2-1 first set. Just speaking about Abhilasha as well, her coach Jaimin Mehta, he's there. He's been associated with Kalinga University via takes it. That is Jaimin Mehta. That's the man speaking about there. He's just making sure Abhilasha keeps her cool. And from Nepal, you generally don't find such strong tennis talents coming across. And Abhilasha Bista can be one among them. Very nice to see. And good to appreciate this from Kalinga, isn't it? From a foreign land, of course from Nepal, which is very close to us, but it's definitely considered as a foreign land. Coming in into the Kalinga University, giving her the seat to study and of course represent. And she's representing Kalinga University itself. She's not representing Nepal, so that's the beauty of it. बिल्कुल बिल्कुल, ये सबसे बड़ी बात होती है कि आप न केवल भारतवर्ष में आई हैं बल्कि भारतवर्ष से आप रिप्रेजेंट कर रही हैं अपने खेलों को, और निश्चित रूप से खेलों को सुधारने के लिए, खेलों को निखारने के लिए अगर आप भारत में आ रही हैं तो हमारा पड़ोसी देश से हमारा दोस्ताना देश है, उनसे हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं। तो नेपाल से आई हुई इस अभिलाषा का जो अभिलाषा है, उनकी जो इच्छा है, उनकी निश्चित रूप से यहाँ पर पूरी होती हुई नज़र आ रही होगी। फिलहाल सर्व करती हुई 2-1 की बढ़त के साथ फॉल्ट वहाँ पर, एक उम्मीद और एक निर्धार निश्चय उनके चेहरे पे साफ नजर आ रहा है। Even in that interview, the chat that we had just on the opener was really nice. Abhilasha looked confident as Nancy gets the first point in this game. The boys played brilliantly well yesterday. Kabir Hans against Kurukshetra, they won. Kurukshetra University, and it was very, very good. Kabir Hans, he is one of the top ranked. I mean, he is the #1 player in Orissa. As per AITA, he's got the 20th rank in ITA as well, and he's also got 1 ATP point. Now, that's brilliant from Kabir Hans. Yesterday he was the main architect behind Kalinga University's victory against Kurukshetra, and he also played the doubles as well. 15-30. He partnered with Aditya Satpathy in the doubles, as once again Nancy is chugging along. गलती करती हुई वहाँ पर, और निश्चित रूप से यहाँ पर मौका है नांसी के पास कि ब्रेक पॉइंट पर वो सर्विस ले लें, यहाँ पर अपने इस सर्व को ब्रेक करें। 15-30 ऑल, और गलती वहाँ पर फिर जो एडवांटेज जो लाभ की स्थिति में थी नांसी वो उन्होंने गंवाया। 30 ऑल होता हुआ स्कोर, तेजी से दूर से खेलने की कोशिश, लेकिन फिर वही गलती, नेट बीच में। Nice, good offer
a forehand, and she celebrates it. Nancy Malik. She puts it wide towards the left of Abhilasha, and the body angle couldn't turn around. क्रॉस कोर्ट खेला पीछे और उसके बाद में बाईं तरफ खेला, देखा कि दाहिनी तरफ कमिट हो रही है, वहां पर बिल्कुल मौका ताड़ा अभिलाषा ने और बाईं तरफ से खेलकर ये अंक लिया 30-40. Oh, that was a long, big loop. And Abhilasha just smashes it and stamps her authority. Deuce now. जिस तरह से वहां पर नैन्सी ने उनके साथ किया था, वही यहां पर अभिलाषा ने किया. देख रही थी बाईं तरफ जा रही है, दाहिनी तरफ से खेलकर अंक लिया. Very important, gets the advantage, Nancy, because it'll be interesting. If she can get this game, that'll be 2-all, and this set will become more interesting. That's what you want to see, exciting and interesting tennis. And the way it rained in the morning, right, advantage going back to Abhilasha. And the way it rained in the morning, we felt that it'll be a very, very delayed start, but thanks to the ground staff here, we saw how they drained out the entire court, and of course the sun coming out now helping the causes. Advantage to Abhilasha. Yeah, Oh, she let it go. That was very easy. Nancy should have made sure the slice worked nicely. Oh. इधर जाओ. बहुत बड़ी गलती यहाँ पर. जो मौका आसान सा उनके पास आया था, बिल्कुल नेट पर चिपकी हुई थी, केवल ड्रॉप करना था. हल्का सा ड्रॉप भी अगर कर देती तो वहाँ पर अंक मिल सकते थे, लेकिन जो एडवांटेज वहाँ पर मिला था वो गंवाया, और इसके साथ साथ अभिलाषा ने ये गेम जीत लिया. 3 के मुकाबले 1 गेम से आगे चलती हुई अभिलाषा बिस्ट. बहुत बड़ी गलती. मैं समझता हूँ कि नवीन, इस तरह से गलतियों से बहुत जल्दी छुटकारा कर लेना चाहिए नंसी को. Or she can't make a comeback. See, again, the forehands are not having so much of an extra power from her. It's love 15 already, and if she does not reduce those unforced errors, see, it was very easy there, and it was a simple straight return, no pressure. But yeah, the forehand with a little bit of a less power behind it, and it is not going to be easy if you give away 4 games away in a set. So that is an important factor that Nancy should realize, especially this game. Oh, good reach from Abhilasha, and a good return, and again, and watch out. She's just running around. Oh, 3 times she stretched it, and what a lovely placement from Nancy. Brilliant. She did not realize that it will be a left placed ball. Beautiful from Nancy to see this point go to her. बिल्कुल तेजी के साथ देखा उन्होंने कि दाहिने तरफ कमिट हो रही है वहाँ पर अभिलाषा, और बाईं तरफ से उन्होंने प्रहार किया, और बाईं तरफ से प्रहार करके उन्होंने ये स्मैश करके ये अंक अर्जित किया अपने खुद के लिए. तो अब निश्चित रूप से अब स्थिति है नंसी के लिए कि 40 लव पर स्कोर है, और इसे एक गेम के रूप में वो कन्वर्ट करें. देखना यह है कि क्या यहाँ पर वो कर पाती है नहीं, लेकिन निश्चित रूप से बहुत अच्छा खेल का प्रदर्शन. पिछला जो शॉट उनका था देखने लायक था, नेट के पास पहुंची थी और दाहिनी तरफ भाग रही थी वहाँ पर अभिलाषा. बाईं तरफ से उन्होंने स्ट्रोक को लिया और अंक अपने लिए अर्जित किया. 40-15. Nice up. Oh, she drawed her near to the net, and then she puts across one. Across. So whatever has happened in this game, it's all because of the placement Kalinga of Institute of Nancy. Industrial Technology That is leads what it 3 is. games Look at to 2 this. first set. Wonderful to see, and she's made Abhilasha work in this game, as we will also be looking at the comeback path for Nancy, as Mahesh will be stepping out for a break. बिल्कुल नवीन, मैं स्वागत करना चाहूँगा यहाँ पर दुष्यंत सिंह का, जबकि नंसी मेरे ख्याल से दोबारा वापस आने की कोशिश में है. यहाँ पर कोशिश में खड़े हैं दुष्यंत. (3-2) in favor of Abhilasha as well. This set nicely poised, and good that Nancy is making a comeback to fight it out hard, because if this was 4-2, it would have been curtains for Nancy. Good morning, Dushan. Hi, morning Naveen. Lovely day today, and
Lucknow, nice breeze. Most unlike summers. And also we've switched off one AC Time. machine instead of two. Yesterday we wanted four. Yeah, nice to see some good tennis happening. Both the players are equally poised. But said that, you know, they need to keep their serves. There are too many serves which are getting broken. And in tennis at this level, you can't afford to break your serve. Said that, we have Abhilasha serving 3-2 and Nancy receiving. What a find, Abhilasha. She's had the opportunity, beautifully placed. Right, that is what you want to see. Left in love. Wonderful forehand. See, Naveen, I keep saying that if you have a good serve, if you come onto the net, you get opportunities, whether you volley it. Now just see how beautifully she's just done a drop on the back. And Nancy had to cover her court. So basically, you have to have a strategy as to how you need to size the court. And also been stressing on that fact of running in. Oh, that was an out one. That will be the first point for Left Nancy. in all. Abhilasha has got a nice service action, smooth, consistent. Some memories that will be very nice from you to be heard is, you remember anybody coming in from Nepal in the tennis arena, making a big one for them? 15. Oh, I've seen a lot of kids from Nepal in schools and all playing racket sports. In fact, half the squash team of Nepal has studied from Lawrence School, Sanar. And they never played squash in Sanar, but yeah, a lot of players from Nepal are taking coaching in India, which is very good. They're our neighbors and we have very good relations with them, and why not? Yeah, and also the interesting fact is they're representing our country. Sorry, Oh, she wanted to just drop it on that forehand, found the nets. So yeah, that is the most exciting part for me. Even you're from there, you come out here, represent our universities, our place. Of course, when you go up in your career, probably you can represent your country as well. There's an option for that. Absolutely. So a lot of them, you see the Southeast Asian 30, games, 40. most of them are training in India. So said that it's 40-30 in favor of Nancy. Abhilasha is giving some negative points. And what I'm wondering, so many serves are getting broken, which is very unlike. Yeah, you saw her jersey behind her back of Abhilasha, KIT. KIIT, that is what they have been associated with, Kalinga University. Deuce. That's so important. Where the Alteval has brought in so much from the German technology that they have been an Indian subsidiary of. Alexander Vaske Tennis University, big name in Germany. And nice that Kalinga University is partnered up with them. Deuce, both the players slogging it out. And that's an unforced error again on the forehand Advantage Mahavir by Dayanand. Abhilasha. Maharishi Dayanand University. You need to cut down on unforced errors. Unnecessarily, there are far too many. And also in the previous game, I'm sure you noticed it, where there were 4 advantages in a row that were thrown away from Nancy. And that is really important now with the advantage. She gets the point as well. That's it. It's 4-2 in this first set. And it's getting more and more exciting. Is it? No. She had the advantage and I think she's got the deuce back. No, it's deuce. Nancy had an unforced error on the forehand, on the backhand side. Still Abhilasha can step up. She needs to get a serve in. Oh, that's nice and deep on the backhand. Advantage She's got to Kalinga make the Institute of opponent move. Industrial You Technology. saw that, Naveen. She hit a nice forehand deep onto her backhand and she had to cover on the baseline, and that's how errors are created. Advantage now to Abhilasha. Yeah, And she Kalinga seals Institute this. of Industrial Yeah, Technology. I just called it 1 point Lead by early. 4 games to That's 2. 4-2 now. Ball is taraf. And it is not looking very good Come on, for get Nancy. What actually went wrong in this game for me was in this last one, the placement what Nancy showed us in the third game was just missing.
She was hitting it very straight into the strength areas of Abhilasha. See, what's really happening is she's only playing from the baseline. Just observe her. Her only strategy is just keep retrieving, you know. And after some time, the other player is moving you, coming onto the net is definitely going to affect your game. Now you see this. That's a lovely forehand cross court. Made Abhilasha put the ball onto the net. If Nancy can just start coming onto the net, you see the difference. Yeah, she's got all those points with those drops and placements when she was near the nets, yes. And yeah, that's what I was talking about Nancy as well. Yeah, she got all those points in the third game where she won that second game, in the third game of this set. It was brilliant. Yeah, she was placing it very nicely. She was making Abhilasha stretch from right to left of the court. Nice service action by Nancy. Very nice service action. Smooth. Body love. Correction. Sorry, After 15. having a good serve, she's still on the baseline. She needs to move up. It makes a lot of difference. And also from the baseline, you're trying a backhand. You know, that's actually putting yourself into a very uncomfortable situation. And even if you're not very tall, Nancy is on an average height. She's not a tall player. With that backhand, again, see, that was just kissing the nets. Sorry, Now off. ball. See what happens, Naveen, when the children are practicing, even when they are practicing, the muscle memory actually develops the way they are practicing. And you'll find most of them hitting the ball from the baseline. And they develop their muscle memory for that. You know, so they have to have an all-round game. They will do mistakes. I'm saying they will do mistakes. But they will be far, far more effective. Yeah, and also, you know, just going in there near the nets, running up and attacking. Probably they'll feel even that's a little of a danger. Double fault. She's losing out on energy, I am guessing, Nancy Malik. So, when you go near the nets, I mean, of course, coaches and everybody training you, that should come from them, is what I feel. That, you know, go get that attitude sort of a thing, instead of staying behind in the comfort zone. And also, you know, just going in there like near an the nets, examination, running Naveen. up, You know, Yes. and you attacking. write what you practice. Probably they'll feel even If you have not practiced that's, something a enough, you're little not of able a to danger. put it down Double on the fault. paper. She's losing Same out on way energy. your I am preparation guessing Nancy Malik. just a platform where they are performing. Near the nets, I mean, For the performance, they coaches need to and put everybody it in training practice you. together, what we are talking about. That should come from them, is what I feel. That, you know, go get that attitude. Again, Nancy giving back the advantage that she got in the earlier points in this game. Dues now. Write what you practice. Probably they'll feel even If you have not once again practiced something enough, you're not able to apologies, put it down on the or paper. rather She's losing Same out on way energy. your I am preparation guessing Nancy Malik just a excuse us platform because where they the are performing. baseline on the score that you can see on the screen For the performance, is not the they right need one. to We will put it tell you in to practice you together, what we are from talking the about. court action because it might take a few seconds of delay. As it's advantage Abhilasha now. Back the advantage that she got in the earlier points in this game. Dues now. Write what you practice. Probably they'll feel even If you have not once practiced again Yeah, Kalinga Institute That was the main Reminiscence point here. Award. rather Played by far games to two. guessing Nancy Malik Just excuse to us she's because fit. the She's baseline on the fit, score that you solid. can see on the screen Just is needs to not the get right a one. We will percentage tell of you to game you from to a the slightly court higher level. action Now you because see it that might forehand, take a she whipped the few ball seconds of delay. nice and hard. As it's advantage Abhilasha now. Back all that she got power comes from that shoulder towards her forearm. Yeah, Jaimin Mehta. Yeah, he's happy as a coach. It's good Yeah, Kalinga Institute that he Reminiscence keeps talking to Award. his player. There are something about solid both these universities. You have a talk with the coaches and players. What do they have to say about how they train, how they're finding this place, and things like that. Absolutely, Jaimin Mehta shared everything to us. It's the on the right of our screen. Here is Jaimin Mehta. He's played a lot of tennis as well, coach. And with the Orissa setup, what he's done very nicely is, as I said, Al Academy is tied up with Kalinga University. What they do is, especially in the Kalinga University setup, to bring in those proper
proper players. They have a 15-day round-robin points matches that's been held amongst the university players. And let me again reiterate this fact. Jamin Mehta, as we see, is there. Not just from his academy, from any academy, that doesn't matter. Because they have to study or probably have that name in the Kalinga University attendance, especially in the Kalinga University setup name. So whether you're from even from a different academy, that's okay. But most of them are from Altewal, which is exclusive attachment that Kalinga has got for many years. Let me again reiterate that is what it looks like as we see. So even from any other academy, like say for example, from Aditya Satpat, that doesn't matter, played the doubles yesterday. He lost the singles though, but he played the doubles along with Kabir Hans. He was from a different academy. He's not from Altewal. So whether even there, from a different Jamin Mehta trains most of them. So that's a very nice setup. I attachment that Kalinga has many years now on third looks up. So even from any other academy, like say for example, from Aditya Satpat, that doesn't matter, played the doubles yesterday. He lost the singles though, but he played the doubles along with Kabir Hans. He was from a different academy. He's not from Altewal. So whether even there, from a different Jamin Mehta trains most of them. So that's a very nice setup. I attachment that Kalinga has again now on that forehand. Where was that brilliant Abhilasha's returns? Like say for example, from Aditya Satpat, that doesn't matter, played the doubles yesterday. What I said, the unforced errors need to be kept at the low, but there is this happens. Even there, that's why you have these statistics figures and things like that. You need to improve on all that. That's second serve. yeah, definitely. And also very important that you go back and seize these visuals. Abhilasha's go back and nurture on your positives and minimize your negatives. Again, not a strong double hand. Right. There is this happens. She takes a lead. That's why she does statistics figures, and then she puts pressure on herself, and then she struggles, but then she comes out of it. But it cannot happen all the time. She likes to start from nurture Lucknow, go towards Nepal, and then come back to Delhi again. Again, not a strong double hand. Right. There is this happens. She takes a lead. Both the players feeling she does start on the baseline, and then she puts pressure on herself, and then she struggles, but then she comes out of it. But it cannot happen all the time. She likes to Now she should have start from nurture Lucknow, making Nancy move from one side of the court to the other side, and then of the come court. back to Delhi again. Again, not a strong That's double how hand. the game is Right. played. There is this happens. She takes a lead. See the players. See how much Nancy had to baseline, forehand to the backhand, and it definitely takes a toll on you. But then she comes And out couldn't of it. reach that backhand Cannot on happen that all the occasion, time. Nancy. And that is why you always stress on the fact that you have more rallies. You will know where to place your points. And once again, Delhi again. This is why we say that Abhilasha likes to go the longer route towards the victory line. Deuce again. See how much Nancy had to baseline, forehand to the backhand, and it definitely takes a toll on you. But then How many times in what 7 games we've had in the first set? This is the 8th game. Always, I've not seen so many dues from yesterday. Now advantage to and once so many again. breaks of service. This is why we say Advantage going that to Abhilasha Nancy. likes to go the longer route towards the victory line. Deuce again. And throwing away the advantages. Yes, Deuce agreed. That suggests that the both are fighting back, but throwing away the advantage, especially Nancy, this is not what you want to see, and this is a conversion. She does not throw away the advantage. She converts it. 3-5 now in favor of Nancy. She's fighting it back. Just one more game to win the set for Abhilasha, but Nancy is pulling her down. To go the longer route towards the victory line. Deuce again. And
throwing away the advantages. We'll keep updating you on the live score from the court. That if there's a slight bit of a delay in the screen on the scoring lines, that's not what you want to see, and just forgive us on that. It's conversion. She does not throw away the advantage. She converts it. 3-5 now in favor of Nancy. She's fighting it back. Just one more game to win the set for Abhilasha, but Nancy is pulling her down. The longer route towards the victory line. Deuce again. And throwing away the advantages. We'll keep updating you on the live score from the court. That if there's a slight bit of a delay in the screen on the scoring line. Stretch an opponent. And when the opponent has to do conversion. She does not throw away the advantage. She converts it. 3-5 now in favor of Nancy. She's fighting it back. That's exactly what is one more game to win the set for Abhilasha, but and Nancy also is pulling her down. high lob she was trying to place. Nancy didn't get it right. Just a touch wider on the live score from the court. and these double falls. Yeah, there is where your confidence breaks. Of course, service breaks are pretty common, and then you have those double falls. She does not throw away the advantage. She converts it. 3-5 now. Abhilasha. That's a beautiful forehand cross One more court. game to win the set for Really Abhilasha. whipped And the also ball hard and that, nice. High lob she was She has trying the to potential. place. She has the Nancy potential to go to the next didn't get level. it right. Just a touch wider on the live score from the court. and these double falls. Yeah, there is where your confidence breaks. In all accelerations, you get a chance, you need to accelerate. You have those double falls. She does not throw away the advantage. She converts it. 3-5 now. That's a beautiful forehand cross court. She is just a point away. It's a love 40. She's just a point away in making sure this game goes to her favor, and also the set. She does it. 6-3. Wonderful domination shown from Abhilasha in this set. Beautifully done. As I will take a little break and welcome Mahesh Tiwari into the commentary box. Beautiful forehand cross court. She is just a point away. It's a love 40. She's just a point away. We're seeing some slow motion action. I'd like to welcome Mahesh. Hi Mahesh. Some good tennis, what we saw in the first set. के साथ आपको ऊपर आना होता है और यहीं पर आपको 18 एलिमेंट्स को अपनाना होता है, कम से कम 90 सेकंड में 18 एलिमेंट्स। तो ये अपने आप में बड़ी चुनौती रहा करती है। में खेलना शुरू किया, अभी सफर काफी बाकी है, देश के लिए खेलना चाहते हैं, अलग अलग आसन अपनाते हुए 60 सेकंड शुरुआती जो रहा करते हैं, लैंडिंग प्रॉपरली नहीं कर पाए, शायद समय का ध्यान उनको रहा नहीं, निराश हैं। लेकिन जिस तरह से प्रदर्शन रहा हेमंत है डोडरिया बीस्ट का शुरुआत क्लाइंबिंग देखिए किस तरीके से रही थी। कलिंगा इंस्टीट्यूट से वो आ रही हैं, जिस तरह से नेपाल से आई हुई ये लड़की, हम कोशिश किया करते हैं इंस्टीट्यूट में सिर्फ कि आपको दोबारा एक हाईलाइट पैकेज के जरिए आपकी जो उनकी फैसिलिटीज पूरी गतिविधि बताएं, किस तरीके से उन्होंने कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल इंस्टीट्यूट से। तो मैं समझता हूँ कि ये सारी चीजें बजरंग पकड़ और उसके बाद फाइनली लैंड किया, उतना प्रभावित नहीं किया, दिखाई, योग्यता दिखाई और 6-3 दर्शकों को भी और शायद जज भी यही कहेंगे। अब दूसरी तरफ हम बढ़ते हैं पोल मलखम की तरफ। पोल मलखम, जैसा कि आपको हमने बताया था, इसमें टैलेंट बहुत उभर के आता है और जैसे ये लड़की है, इसका गेम देख के लगता है कि इसमें कितना प्रॉमिस है। अब इसको इस लेवल से दूसरे लेवल में कैसे ले जाया जा सकता है, कोई इसको नेक्स्ट लेवल में ले जाना। इस लड़की में अभी तो ये खाली 30% पोटेंशियल तक आई है, इसको में बहुत ज्यादा पोटेंशियल आगे अच्छा करने का। बिल्कुल, आपने उसकी योग्यता को शुभम रख लिया है, तो निश्चित रूप से आने वाले भविष्य में थोड़ी देर पहले तैयारी कर रहे थे। बशर्ते ये प्रयत्न जारी रहने चाहिए, आपकी कोशिश जारी रहनी चाहिए, आपको हर तरह की फैसिलिटीज मिलती रहनी चाहिए और आपका निर्धार पोल मलखम पर शुरुआती आपके इरादे बुलंद होने चाहिए। खिलाड़ी अपनी शुरुआत किया करता है तब स्पीड कहीं ज्यादा दिखाई दिया करती है और जाहिर सी बात है तेजी आपको लानी ही होगी जज को प्रभावित करने के लिए टॉप पर। और कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल इंस्टीट्यूट के बीच में तेजी के साथ अपने आप को दूसरी एक्टिविटी में झोंका करते हैं लाल जर्सी वाली, और यही ताकत और यही खूबी हुआ करती है इस तरीके से बैलेंस बनाना। इस समय पोल में दरअसल सबसे ज्यादा इस्तेमाल थाइस का हुआ करता है, जांघों की ताकत जो रहा करती है वो दिखाई देती है।
चकोर आसन की तरफ तो बढ़ते नए हुए गेम की शुरुआत, नए सेट की ये है शुरुआत चकोर यहाँ पर आसन, करती हुई, सर्व जिसको के लिए हम तैयार होती हुई वहां पर अभिलाषा। अगर योगा का ज्ञान रखते हैं जो दर्शक भली भांति जानते होंगे, Love 15. और आप लेग्स कॉम्बिनेशन निरंतर आप both the players exchanging some good rallies from the baseline. Out. बाहर खेल गए काफ़ी तेज़ी के साथ। जो बैक हैंड रिटर्न था उनका सीधे डाउन द लाइन खेलने की जो कोशिश की थी, बेस लाइन के बाहर चली गई और यहाँ पर अंक मिला है नैन्सी को। तो लव 30 स्कोर इस समय। यहाँ पर जो ताकत लगी थी वो दूर चली गई थी और निश्चित रूप से एक अच्छी बढ़त। यहाँ पर नेट के पास जाकर हल्का सा ड्रॉप उनका और यहाँ पर उसका फ़ायदा लिया नैन्सी ने बढ़ते हुए कदमों के साथ। खाली जो क्षेत्र देखा पीछे की तरफ और वहाँ पर हल्के से ड्रॉप करके उन्होंने ये अंक ले लिया। हल्के से ड्राइव करके, मैं कहूँगा कि बॉल पे लेकर ड्राइव किया था और ये लव 40 स्कोर इस समय। अच्छी वापसी नैन्सी की। उसी तरह का प्रति हल्ला करने की कोशिश की थी लेकिन बहुत ही आसानी के साथ वो अंक गंवाया और ये गेम पक्ष में जाता हुआ नैन्सी मलिक के 1-0 की बढ़त आते ही कुछ मिनटों में, मैं समझता हूँ 1.5-2 मिनट में ये पहला गेम समाप्त हुआ। दुष्यंत बहुत तेजी के साथ कुछ अच्छे विचारों के साथ आई है लगता है नैन्सी दूसरे सेट में। देखो महेश, मुझे जो इस बच्ची के गेम में लगता है कि ये कभी स्पर्ट्स में बहुत अच्छा खेलती है और कभी कभी अपने ऊपर अनफोर्स्ड एरर्स करके अपने ऊपर प्रेशर क्रिएट कर लेती है और जब प्रेशर क्रिएट करती है अपने ऊपर तो उससे फिर थोड़ा सा, अभी जैसे इस गेम में इन्होंने 4 पॉइंट्स बड़े इजीली हराए हैं, लूज़ करे हैं। थोड़ा सा अपने आप को कंपोज रखो, टाइम लो रैली के बीच में और आपको जिसको बोलते हैं यू हैव टू स्लॉग इट आउट, यू गॉट टू हैंग इन, यू गॉट टू प्ले लॉन्गर रैलीज। कोई आपको हाथ में पुरुष के तो देगा नहीं। बिल्कुल, आपको खेल के दौरान ही अपने प्रतिद्वंदी की कमजोरियों को भांपना है, नापना है, तौलना है और उसके बाद आपको उसके अनुरूप खेल अपना खेलना है। तो वो सारी चीज़ें, ये आकलन बढ़ते हुए समय के साथ, एक्सपीरियंस के साथ, आप तो खुद एक प्लेयर रहे हैं स्कॉश के, तो आप समझ सकते हैं कि ये अनुभव ही सिखाता है और बीच मैदान पे जब खिलाड़ी खेलते हैं तो भी सीखते हैं। एकदम व्हाट यू सेइंग इज राइट महेश, बट व्हाट आई सेड yesterday also, that we as Indians mature very late compared to the Americans, to the Europeans. By 20, those people are ready to be in this platform, on the world platform. 15 all. नेट पर उलझती हुई यहाँ इस समय नैन्सी मलिक ने गलती की और मौका मिला है आगे बढ़ने का एक कदम वहाँ पर अभिलाषा को। इस समय 15-30 स्कोर। हाई टॉस सर्विस, बैकहैंड, फोरहैंड का और यहाँ क्रॉस कोड बिल्कुल तेजी के साथ ताकत लगाकर और सही, जिसे कहते हैं ना कि एक सही वक्त पर कनेक्ट करना, वो यहाँ पर कर पाए अभिलाषा। यही तो मैं बोल रहा हूँ, इस बच्ची में टैलेंट थी। इसको बोल एक्सेलरेशन देखो आप। हाँ। इसका फोरहैंड का एक्सेलरेशन कितना अच्छा है। इंस्टॉलमेंट में अच्छा खेलती, इंस्टॉलमेंट में गलतियां करती है, ये कहा जा सकता है। बैंकर के लैंग्वेज में अगर कहें तो इंस्टॉलमेंट वाली जो बात है वो यहाँ पर नजर आ रही है। और ये अगेन अनफोर्स्ड एरर अभिलाषा का। फोरहैंड पे बहुत एरर्स कर रही है ये। 30-40। अच्छी रैली और यहाँ पर ये अंक नेट को चूमती हुई, लुढ़कती हुई, विपक्षी पलड़े में गिरती हुई और गेम इस समय पक्ष में जाता हुआ अभिलाषा के। तो एक गेम की बराबरी चल रही है इस मुकाबले में। पहला सेट 6-3 से जीता था अभिलाषा ने, लेकिन दूसरे सेट के 2 गेम दोनों खिलाड़ी 1-1 जीत चुके हैं। Now Mahesh, let's observe this game of hers. Last game she lost all of 4 points, but she has a beautiful serve action. She just needs to rally more. She just needs to be a bit, she shouldn't hurry up.
Love 15. Again, unforced error on the backhand. दोनों प्लेयर्स को अपनी सर्व पे थोड़ा सा कंट्रोल रखना पड़ेगा. ये बैकहैंड और फिर गलती वहां पर अभिलाषा से, लगातार 2 गलतियां. लव 30 स्कोर. जिस तरह से वापसी की थी इसके पहले वाले गेम में, वो गेम अब ये तीसरे गेम में फिर से वही गलतियां यहाँ पर नजर आ रही है अभिलाषा की. Nice exchanges from the baseline. Outs. वाह वाह, बहुत बेहतरीन रैली हुई, लेकिन उसके बाद अंततः वह अंक गंवाया. यहाँ पर फिर अभिलाषा ने गलती की. अपने आप से बात कर रही है निश्चित रूप से कि क्या गलती मुझसे हो रही, क्या मुझे सुधारना करनी होगी. और आत्मचिंतन ही सबसे बड़ी बात होती है किसी भी खेल में, अपने आप को निखारने की, सुधारने की. जब खिलाड़ी अपने आप से बात करता है, अपने आप से ये निर्धार करता है कि क्या गलतियां मुझसे हो रही, क्या नहीं होनी चाहिए. फिलहाल लव 30, लव 40. गुड गेम. 15-40. आप देखिए, आप कितना अच्छी रैली खेली अभिलाषा ने, पर नैन्सी की तारीफ करनी पड़ेगी. शी इज रिटर्निंग अ लॉट ऑफ बॉल्स बैक. अब यह है कि अगर अभिलाषा ये गेम भी हार जाए तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी इफेक्ट होगा, और सेट में भी आप थोड़ा सा देखोगे कि स्कोर में कुछ फर्क आएगा. लव 40. महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ. डबल फॉल्ट नहीं करना चाहेंगे. सेम चावला वर्सेस और डबल फॉल्ट, और उसके साथ ही ये गेम जाता रहा पक्ष में नैन्सी मलिक के. तो ये अच्छी वापसी. जहां तक नैन्सी का सवाल है, 2-1 की बढ़त उनके पास मौजूद हो गई है दूसरे सेट में. और क्या शुरुआत की थी वहां पर अभिलाषा और नैन्सी ने, लेकिन उसके बाद पहला सेट 6-3 से जीता. और उसके बाद अब इस दूसरे सेट के 3 मुकाबले हो चुके हैं, 3 गेम हो चुके हैं, जिसमें 2 के मुकाबले 1 गेम से आगे चल रही है नैन्सी मलिक. और निश्चित रूप से अच्छा प्रतिकार, अच्छा उत्तर देने की कोशिश उनकी है. देखिए किस तरह से आगे जाकर उसे डाउन द लाइन खेलने की कोशिश की थी. बिल्कुल नेट के पास खेला, उसके बाद में हल्के से ड्रॉप करने की कोशिश थी विपक्षी पलड़े में, लेकिन बाहर खेल गई. और अंक निश्चित रूप से वहाँ पर मिलता हुआ चला गया नैन्सी मलिक को. तो दयानंद यूनिवर्सिटी, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी के नैन्सी मलिक और कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी की KIIT की ये अभिलाषा बिष्ट के बीच में चलता हुआ संघर्ष मुकाबला, जहां पर एक के बाद एक दोनों खिलाड़ी प्रयत्नशील हैं. और यहां पर स्कोर जब तक कि रुका हुआ था 2 गेम के मुकाबले 1 गेम से नैन्सी आगे चल रही हैं. जबकि स्लो मोशन के जरिए आपको पूरा खेल का, ये गेम का नज़ारा पेश किया जा रहा है DD स्पोर्ट्स के माध्यम से. चेयर अंपायर इस समय रोहित, और निश्चित रूप से पहरेदारी करते हुए. तो स्वागत है दोबारा आपका यहाँ पर नवीन. थैंक यू महेश. What Abhilasha has shown us is she can just make the opposition think differently. But that was a lovely ace from Nancy. Brilliant. 15 love. I think that's her first ace in this entire match, I should say. She's not had a single ace serve in the first set. This was brilliant to see. And against Abhilasha, not easy. She did it well. 30 love. That's 30 love now. लगातार 2 गलतियां वहां पर, और अच्छी वापसी मैं समझता हूं कि नैन्सी ने की है, और गलती करने के लिए विवश किया है. वहां पर थोड़ी सी अपना जो कॉन्फिडेंस था, जो फुटवर्क था, उसमें थोड़ी सी मैं समझता हूं कि ढिलवंगी वहां पर आई है अभिलाषा के, और वो तेजी नजर नहीं आ रही. And she's making her run around. Now that is very, very important again on that backhand slice. This is good start for this game from Nancy. 40 love. The way she was making her run around, and then the chop worked in her favor. निश्चित रूप से ये जो गलतियां दौड़ तो रही हैं, लेकिन दौड़ने के बाद वो जो ड्रॉप करना चाहिए, जो कनेक्ट करना चाहिए, वो राइट समय में, सही समय में कर नहीं पा रही हैं. और यही वजह है कि वहाँ पर यहाँ आउट खेल गई, और पहली बार यहाँ पर कदम बढ़ाने का मौका, अंक खुलने का मौका मिला अभिलाषा को इस गेम में. 40
15. Again, Mahesh, the only problem is where, if we can watch that again, Nancy did not run near the net. And that is what we've been really insisting on. If she had done that, she had a very good return, and that ball just brushed the nets. It was slower in pace, and she started late. Yes, she had to run. She started late and just placed it wide. Yeah, That was out. Dayanand University. 3-1 now for Nancy. Wonderful victory on this game. She's coming back strong. And Abhilasha just trying to just come back into the set very strongly, but just one game victory. And she will have the serve though. बिल्कुल 6-3 से हारने के बाद भी इस दूसरे सेट में 3-1 की बढ़त नैन्सी मलिक के पास मौजूद है। तो क्या वो ब्रेक पॉइंट लेंगी, यहाँ पर सर्विस ब्रेक करने की कोशिश करेंगी अभिलाषा की, और 2 डबल फॉल्ट के जरिए ये अंक यहाँ पर मिलता हुआ 15 लव 15। मैं समझता हूँ कि थोड़ा सी एकाग्रता भंग हुई है न किसी चीज़ को लेकर। वहाँ पर अभिलाषा का जो कंसंट्रेशन था, जिस एकाग्रता के साथ वो खेल रही थी नवीन, वो थोड़ा सा भंग होता हुआ नजर आया। We saw that she had taken off her shoes and socks, maybe some blisters in the leg that might be playing on the mind. 15 all now because of Nancy's big blob, and again on that forehand return places it very wide. 30-15 now. Yeah, just because of a little bit of a blister, yeah, that can play at the back of your mind. बिल्कुल आसानी के साथ एक ही जगह पे खड़े खड़े वहां पर नैन्सी ने खेलने की कोशिश की थी और अंक अर्जित किया। एक ही जगह पर कोई अतिरिक्त विपरीत डायरेक्शन में वहां पर मारने की कोशिश भी नहीं की थी अभिलाषा ने। फिलहाल स्कोर 30 ऑल। शूज को लेकर किसी चीज को अब बात कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम वहां पर नजर आ रहा है या? Might be because you never see players just not comfortable with the shoes. We think she's got a different pair of shoes. There again, high lob goes outside the baseline, gives Nancy 40 now, 30-40. अगर किसी तरह की कोई दिक्कत है तो उसे सुधारा जा सकता है। मिड ऑफ मैच में आप गेम के बाद अपने शूज बदल सकते हैं अगर कोई प्रॉब्लम है तो, अदरवाइज वी डोंट नो एक्चुअली व्हाट इज द प्रॉब्लम। और यहाँ फिर डाउन द लाइन खेलने की कोशिश की थी, बाहर खेल गए और एक करके आगे बढ़ते हुए यहाँ पर कदमों को बढ़ा रही हैं नैन्सी मलिक, जिन्होंने कि 6-3 से पहला मुकाबला गंवाया था, लेकिन दूसरे सेट में 4 के मुकाबले 1 गेम से वो आगे चल रही है। अच्छी वापसी, मजबूत वापसी हारने के बाद पहला सेट। अगर आप इस तरह से खेलती हैं तो काबिल तारीफ। Much needed for Nancy and Maharshi Dayanand University, because all that she did here in the set was she just made Abhilasha run around and sweat it out. She did not allow her all those forehands. She did not allow her all those backhands to come across. Few errors only, and then made sure the complete control was with Nancy along there. You see her kind of sweating it out and something it. To sum it up, she's not comfortable. We'll have to go back and see what is bothering her. Of course, Mr. Mehta, the coach, will be there alongside with Abhilasha. बिल्कुल, मैं तो समझ रहा हूँ कि नैन्सी ने उन्हें गलती करने के लिए विवश किया है इस गेम में। ज़्यादातर आपने देखा कि जगह से खड़े खड़े ही हर स्ट्रोक, लगभग 50% से ज़्यादा स्ट्रोक अगर हम काउंट करें तो नैन्सी ने एक ही जगह से खेले हैं, और गलती करने के लिए विवश किया वहाँ पर अभिलाषा को। वो खुद दौड़े, इधर उधर दौड़े, और उसके बाद वे गलतियाँ हुई और उसी का फ़ायदा लेकर यहाँ पर 4-1 की बढ़त हासिल कर ली दूसरे सेट में नैन्सी मलिक ने। Nancy's been asked by her coach to just hold it on the head. Yeah, you've got the lead. Just 2 more games and the set will be yours. We'll get into the 3rd set. That is what she has to do now, Abhilasha. She's probably a bit nervous to start off, is what I felt. Nice return that was, but was just a little wider on the forehand. It was nice rallies. I was just looking at those cross courts. Abhilasha trying a different thing on the forehand, placing it wide. बिल्कुल, जब आप अतिरिक्त कुछ करने की कोशिश करते हैं ना नवीन, तो गलतियां आपसे होती हैं, और वही गलती यहाँ पर हुई
अभिलाषा से अब इस दाहिनी तरफ खेलकर उन्होंने ये गलती को पूरा किया, अंक लिया, 15 ऑल होता हुआ स्कोर। तो ये अतिरिक्त करने की जब कोई कोशिश करता है, ज़्यादा ताकत लगाने की कोशिश करता है, जल्द से जल्द खेलने की कोशिश करता है, तो टेनिस में गलतियां होती हैं। 15 ऑल। 15-30. Again forehand does not come through for Abhilasha. Nancy is saying yes. Come on, let's get this on. 15-30 now. And what she did very nicely was corrected her mistake very soon. Now she's got an opportunity on the right side of the court. She does blast it out there. 15-40. That's the second time that she's doing this. Brilliant. And she gets into that zone where she just needs one more point to win this game. बिल्कुल मौका जो मिला था उसे कैपिटलाइज किया और ये नेट को चुमकर गेंद अपने ही पलड़े में गिरती हुई, इसके साथ ही गेम यहाँ पर मिलता हुआ अभिलाषा को। तो थोड़ी देर के बाद ही सही, लेकिन अच्छी वापसी यहाँ पर अभिलाषा के द्वारा। 4 के मुकाबले 2 अंक से पिछड़ती हुई, लेकिन पहला सेट उन्होंने 6-3 से जीता है। Very quick this game was, Mahesh. It was very quick compared to all the games that we have seen, especially compared to the first set games. This game was quickly finished by Abhilasha. She knows that she can't let that lead slip away. Goes out again from Nancy. 15 love. इसी तरह से निर्धार पूर्वक उन्हें खेलना होगा, दृढ़ संकल्प के साथ, इच्छा शक्ति के साथ उन्हें खेलना होगा। हाई टॉस सर्विस, और सर्विस में कोई प्रॉब्लम नहीं, दिक्कत नहीं। फॉल्ट तो हुआ है, लेकिन अभी तक डबल फॉल्ट वाली जो बात है वो नहीं हुई है। Right, can she just... There was an opportunity for her to bring Nancy near the nets. Oh, not a strong backhand. You wanted that grip to be really proper. And use of the racket, especially near that bottom hand where you have to change directions. Your backhand should be really strong. नेट को चुम कर गई, इसलिए लेट। That was just wide of that service line. Now she gets the point. Brilliant. 40 love now. What is happening with Nancy? 40-30. See, if she comes onto the net, if she gets a short ball, she can take advantage. She's got the game also. Very important point. Ball le lo. Lob, chance of a smash, does not do it. Again, there's a chance. Oh, she placed it wide. She just placed it wide. Deuce. Not the way Abhilasha would have wanted to end that. Deuce again. That was not required at all. It's a very elementary shot. No excuse for that. And she's once again pulled that blanket of pressure onto herself. Deuce with 4 all the set. And Mahavir Dayanand University. Still figuring out where she'll get that one more point. She's got the advantage given away once again to Nancy. She's just throwing it away. One stupid mistake and she just put the whole pressure back on her. Deuce. Oh, deuce. Nancy throws the advantage back. She is known to do that. The more the matches they play, the more the match temperament will improve. They just seem to be short on playing matches. So I think when you do interview her, ask her this question: ki you move in the front and then you do these silly mistakes and create pressure on yourself. Are you short of match practice? And now when she comes near to the nets, look at the difference. Look at the difference. She gets the advantage back now, Nancy. Brilliant volleys from every single move that she did, and that placement to kill it. Beautiful.
Deuce. Gets the advantage back. Again a deuce now. Cannot do much about that. Can't complain. Nancy thrown it away. Not getting a first serve at all in this set. Court number 3, Osmania Right. University versus This is University interesting. of Rajasthan. Again on the deuce, Advantage like it for happened University of in the Industrial first sets. Technology. I think the fifth game. Bhumna Yadav We're all versus playing on the Ayushi deuce. Tandon. Chair umpire Sridharan. Unforced error by Nancy. When you're creating a lot of errors, then you just stay in one place and rally and get your confidence back. And that's an unforced Yes. error once again that you see here. Yeah, this is not going either ways. Both of the serves that were really well done from Abhilasha. She did not capitalize on that. Starts were good. And that's well played by Advantage. Nancy. Whenever she's coming up to the net, she's winning a point. Yeah, very clearly. And she did not go over anxious, overpowering that placement. They are just dropping it. I remember our coaches used to tell us that don't create your disadvantage to your advantage. Create your advantages other way around. So, you know, it's all her doing in this set. She had the game wrapped up. Deuce. And she's thrown it away. Because of Abhilasha's power on that forehand. Look at that. Beautifully put it across. Nice rally, and that's a beautiful shot. Advantage. Too much power. Maharishi Dayanand Advantage to University. Nancy now. She has to get this sealed, this game. Only one more point and she'll stay in the match and she'll stay in this set. She runs near the nets and she Maharishi scores. Dayanand University. That is what you need. Lead by 5 games to 5-4 4, second to set. Nancy. That's the first time she's taken a lead in the game. And this set is just one game away for Nancy. Let's see it in the slow motion. It's a nice serve where she. It's a high ball. She'll just come and on the backhand she just slices it. So the score stands. First set to Abhilasha 6-3. Second set, Abhilasha trailing 5-4 to Nancy. I would like to welcome our Hindi commentator, Mr. Mahesh Tiwari. Both the players taking a break. Nancy seems, what you see on the screen is Nancy sitting, looking very composed, and that's Time. Abhilasha. महेश अगर अपन को इसमें स्टैटिस्टिक्स फिगर्स मिलते दैट फर्स्ट सर्व की परसेंटेज, सेकंड सर्व की परसेंटेज, विनर्स, अनफोर्स्ड एरर्स, और ये शीट्स बड़ी इम्पोर्टेंट होती है Get close करो. कि मैच के बाद ये शीट्स प्लेयर्स को भी जो उभरते हुए प्लेयर्स हैं उनके हाथ में देनी चाहिए. उससे उनको मालूम पड़ेगा, जिसमें ये रिफ्लेक्ट करेंगे कि कहाँ ये गलत जा रहे हैं और कहाँ इनको इम्प्रूव करना है. बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि इनके जो कोच है या उनके जो नहीं, अभी सहयोगी नहीं. हैं शायद इसके इंडिविजुअली हेलो, वो अपने आप टोमेटो के लिए से, तैयार हाँ. करते होंगे, शायद इस तरह से कोई बातें हों. लेकिन जो सीट्स हैं उसके लिए अगर जो स्कोरर है या जो अंपायर्स हैं वो इस तरह की कोई सुविधा मुहैया कराए तो बात अलग है. लेकिन 5-4 की अच्छी वापसी यहाँ पर नैन्सी मलिक ने की है इस गेम में. अब
स्कोर जो है लो 15 लो 15 लो. Yes. Unforced error on the forehand by Nancy. Nice service. Both the players again playing on the baseline. I can see Abhilasha trying to move to the net. Oh, जो मौका मिला पूरी तरह से भुनाया उसे. And that's a beautiful forehand by Abhilasha. You can see that she moves in, and that's a beautiful winner, which leaves Nancy completely stranded. मौका ही नहीं मिला हिलने तक का, और काफ़ी तेज़ी के साथ बैकहैंड दोनों हाथों का इस्तेमाल करके उन्होंने खेल दिया था. तो इस समय स्कोर अभिलाषा के पक्ष में लव 30. बहुत ही very nice shot on. महेश, what I'm noticing, जब ये अपनी सर्व करती है तो ये अपने आप पे प्रेशर बना लेती है, बट सर्व रिटर्न जब कर रही होती है तो खुल के खेलती है. इसके दो पहलू का गेम दिख रहा है मुझे यहाँ पर. यहाँ पर मौका मिला बिल्कुल बाईं तरफ खाली, क्योंकि दाहिनी तरफ वहाँ पर नैन्सी भाग रही थी और दाहिनी तरफ से खेलकर अंक अर्जित किया था. स्कोर लो 40 इस समय. तो अच्छी वापसी, ब्रेक पॉइंट पर है इस समय. नहीं, 5 ऑल बिल्कुल गेम पक्ष में करती हुई यहाँ पर अभिलाषा, और 5-5 की बराबरी होती है. अभी आप देखो कितना अच्छा गेम खेला जब रिसीव कर रही थी. अब आप देखो ये प्रेशर क्रिएट करेगी अपने ऊपर, और जो उल्टा होना चाहिए. अभिलाषा को ये गेम जीत कर निश्चित उसके बाद और 2 गेम का जो फासला होगा वो बहुत ज़रूरी है. यहाँ से 5-5 की बराबरी पर चल रहे हैं. जैसे मैंने आपको बोला, बैकहैंड में अनफोर्स्ड एरर करके कोई जरूरत नहीं थी उसकी. लो 15. Oh, beautiful shot by Nancy on the forehand. Love 30. Whenever she's moving in the front, she's winning a point. आप देखिए, अच्छा रिट्रीव करा बैकहैंड से. अभी शॉर्ट बॉल मिली, आगे आई और विप करके उसको फोरहैंड पे खत्म करा. बिल्कुल नियंत्रित किया अपने शॉट को, और वहाँ पर मौका नहीं मिला था दाहिनी तरफ जाने का अभिलाषा को. तो अच्छी वापसी इस गेम में. जहाँ तक का 15-30 अभी भी स्कोर है. 40 लैप, 40 सॉरी. गेम महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी. अब आप देखिए महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी लीड 6 गेम्स टू 5 सेकंड्स. कैसे ये सर्व रिसीव करने में खेलती है और खुद की सर्व में क्या करती है. बिल्कुल. और ये कंसिस्टेंट दिखा जा रहा है. बिल्कुल लगातार उनसे ये गलतियां हुई हैं, और उसी की वजह से यहाँ पर नैन्सी मलिक को मौका मिला कि वो एक गेम जीत सकें. अब नैन्सी मलिक से भी बात करने के लिए उनकी सहयोगी खिलाड़ी आ चुकी हैं वहाँ पर, और हिदायतें देना, सूचनाएं देना बहुत ज़रूरी होता है. वही सूचनाएं जैसे अभिलाषा को दी जा रही थी उनके कोच मेहता द्वारा. तो मैं समझता हूँ कि यहाँ भी अब उसी तरह की कोशिश कि किसी तरह से नैन्सी को भी वहाँ पर प्रोत्साहित किया जाए, और बहुत ही अच्छी तरह से वापसी की यहाँ पर. गेम जीतकर 6-5 की बढ़त नैन्सी के पक्ष में. पहला गेम भले ही 6-3 से हारी, लेकिन दूसरे गेम में कड़ा संघर्ष करती हुई, विवश करती हुई वहाँ पर अभिलाषा को कि वो एक पॉइंट के लिए वहाँ पर जद्दोजहद करे, संघर्ष करे. अब इसमें महेश, what she needs to do is she needs to put some tactics into play. Tactics in the sense that she should take time between serve, she should take time between rallies, whatever she can take. She should change her approach. Right now she's pushing it through, and in the process of pushing it through, she's finding it creating too many mistakes on her serve. So there has to be a think tank. The coach should tell her to take your time, relax, थोड़ी ब्रीदिंग आप कंट्रोल करो. बहुत अपने आप पे प्रेशर ले रही है अभी. बिल्कुल. टेनिस कोर्ट पे चलते हुए खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के अंतर्गत का ये लॉन टेनिस का मुकाबला आज का दूसरा दिन है, और ये मुकाबला इस समय जो चल रहा है वो पंडित दयानंद यूनिवर्सिटी और कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी के बीच में संघर्ष चल रहा है, जहाँ पर
पहला सेट जीता है कलिंगा इंस्टीट्यूट की अभिलाषा बिष्टा ने 6-3 से, और दूसरा सेट का जहाँ तक सवाल है 6-5 स्कोर। Both the players back on the court. Nancy losing the first set 6-3, leading the second set 6-5. First fault. 15 love. Wide on the forehand by Abhilasha. ओह, पीछे ले गई, फिर नेट के पास आई, ड्रॉप शॉट खेला, उसके बाद में जैसे ही चॉप करने की कोशिश की धीरे से विपक्षी पलट में, वहाँ गलती कर गई थोड़ी सी जल्दबाजी में वहाँ पर अभिलाषा, और निश्चित रूप से स्कोर यहाँ पर 30 लॉ। Unforced error by Nancy. 30-15. They just need to keep the ball in play now. Nothing fancy. First fault. Bhaiya. Serving on the backhand court. गलती नेट पर खेली और यहाँ पर लाभ की स्थिति में है, और क्या ये सेट पॉइंट होगा, क्योंकि केवल एक अंक दूर है, 6-5 से आगे चल रही है यहाँ पर नैन्सी। ओहो हो, तो 7-5 से ये दूसरा सेट अपने नाम किया नैन्सी ने। बहुत ही अच्छी वापसी उनकी, 6-3 से परास्त होने के बाद, हारने के बाद दिलेरी के साथ, मजबूत इरादों के साथ, अच्छी संकल्पना शक्ति के बदौलत मैं समझता हूं कि यहाँ पर नैन्सी की जितनी तारीफ की जाए कम है। जिस तरह से गलती करने के लिए विवश किया उन्होंने, बिल्कुल जगह से खड़े खड़े उन्होंने अपने स्ट्रोक्स लिए, और नैन्सी ने जो अतिरिक्त करने की कोशिश की, वो अतिरिक्त करने की कोशिश में आप गलतियां करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा करने की जब कोशिश करते हैं, अपने नेचुरल गेम से हटने की कोशिश करते हैं, तो गलतियां आपसे होती है। और to do a lot of unforced errors, which is an ideal example of the second set what we saw right now. बिल्कुल वही हुआ वहाँ पर। नैन्सी ने गलतियां करने के लिए विवश किया वहाँ पर अभिलाषा को, और ज़्यादातर अभिलाषा जो अतिरिक्त करने की कोशिश की, देखिए यहाँ भी वो गलती जो उनसे हुई थी, हल्के से ड्रॉप शॉट खेलने की कोशिश की थी और वहाँ नेट पर खेल गई। तो ये सारी गलतियों से निजात पाना होगा, छुटकारा पाना होगा। अगर एक अच्छी प्रतिभावंत खिलाड़ी, दोनों खिलाड़ी उतने ही योग्यता से परिपूर्ण है, जैसे मैंने पहले भी कहा, लेकिन जो स्टार्ट की थी अभिलाषा ने, जो काबिल तारीफ खेल का प्रदर्शन उन्होंने किया था, वो बहुत हद तक अब उस पर दबाव डाला है, उसको खंडित किया है नैन्सी मलिक ने। और पैर में किसी तरह की जो चोट आई है या किसी तरह की कोई जख्म नज़र आ रही है जहाँ पर बैंडेज लगाया जा रहा है नैन्सी मलिक के द्वारा, शायद किसी तरह से अपने आप को, ये कोई ग्रिप के लिए तो नहीं होता है ना, नहीं, मेरे ख्याल से कुछ चोट आई है। दिस इज अ ब्लिस्टर वेयर शी जस्ट टेपिंग इट अप। देखो थोड़ा फ्रिक्शन होता है कोर्ट में, गर्मी भी है और बच्चे काफ़ी हार्ड प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये तो पार्ट एंड पार्सल है, ये सब चोटें चलती रहती है। और चूँकि धूप है, काफ़ी गर्मी है, और जब खिलाड़ी बीच मैदान पे खेलता है तो वैसे ही उष्णता तेज़ हो जाती है, उसकी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, और उष्णता की वजह से पैर जो घिसते हैं तो कुछ जख्म होना बहुत लाजमी, बहुत स्वाभाविक है। तो इस तरह से अपने आप को तंदुरुस्त करना, फिट करना, और ये सारे मैं समझता हूँ कि जो इसी तरह से तब कर आप एक अच्छे खिलाड़ी बनते हैं, चाहे धूप हो, ठंडक हो, हर माहौल में आपको ढलना पड़ता है, खेलना पड़ता है। आप ये नहीं कह सकते कि भाई मैं ठंडे प्रदेश से आया हूँ, मैं गर्मी में नहीं खेलूँगा, मैं गर्मी से आया हूँ ठंडक में नहीं खेलूँगा। तो ये खेल कर ये हर तरह के, आपको क्ले कोर्ट पे भी खेलना है, आपको ग्रास कोर्ट पे भी खेलना है, तो ये सारी चीज़ें हैं और इसी से अच्छे खिलाड़ी बनते हैं। Absolutely, Mahesh, what you're saying, it's called a very one word in English called adaptability to any situation, and that's exactly what the players should be showing. But said all that, very impressed with the kind of standard of tennis we are seeing, and definitely these children should be, observed. Talented kids have to be listed down. Their programs, their periodization programs, their diet programs, everything should be looked after. As I said, fantastic initiative by the government of India on this Khelo India Games, and also from the Uttar Pradesh government
for bringing the Khelo India University Games to Lucknow. Great. And today, Mahesh, आज opening ceremony की भी है आज. कितने बजे और कहाँ पर है वो? शाम को 6 बजे का प्रोग्राम है, लेकिन बारिश हुई थी सुबह, तो ऐसा लग रहा था कि शायद उस पर किसी तरह का खलल ना आ जाए, किसी तरह की विघ्न ना आ जाए, लेकिन यहाँ पर इंद्र देवता ने मेहरबानी की, सुबह का मौसम ठंडा किया उन्होंने, जो कल काफ़ी 38 लगभग 40 डिग्री के ऊपर टेम्परेचर चला गया था, वो उन्होंने थोड़ा सा उसे कम किया सुबह बारिश गिराकर, और उनकी मेहरबानी की वजह से थोड़ा सा ठंडक ज़रूर है, लेकिन हाँ, अब सूरज देवता अपने प्रकोप में नज़र आ रहे हैं, थोड़ी सी उनकी धूप निखर चुकी है और उष्णता यहाँ पर बढ़ती जा रही है, और गर्मी मैं समझता हूँ कि अब थोड़ी देर के बाद यहाँ पर अपने पूरे फॉर्म में नजर आएगी, क्योंकि बारिश गिरी तो जमीन तपेगी ज़रूर और उष्णता और ज़्यादा यहाँ पर नजर आएगी. Yes, Mahesh, what you said is a bonus in the month of May to get rain, and that also cool breeze making it pleasant. ये तो मैं सोचता हूँ कि एक बहुत बड़ा बोनस हो गया ना, तो नॉर्थ इंडिया में मई में एंड मई में बरसात तो बहुत कम देखने को आती है. बिल्कुल, और निश्चित रूप से अब समय के साथ साथ देखना है कि ये जो दोनों खिलाड़ियों ने एक एक सेट जीते हैं, तो तीसरा जो निर्णायक 10 पॉइंटर खेला जाएगा, जो इस खेल के नियम है, या 11-20 25 जैसे कि कल हुआ था कि दोनों खिलाड़ियों ने एक एक गेम जीतने के बाद 10 पॉइंटर खेला गया था. 10 पॉइंट्स का जिस खिलाड़ी ने अंक अर्जित किया था पहले, उसे जीत संदेश ने जीता था, आपको याद होगा. तो मैं समझता हूँ कि शायद इसी तरह का कोई प्रबंध यहाँ पर हो, और वही होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से खेल के नियम है वो कल जो थे वही आज होंगे. नेट पर उलझी वहाँ पर, और निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि ये खेल बिल्कुल पॉइज्ड है, और दोनों खिलाड़ी यहाँ पर जीतने की उम्मीद लेकर खेलते हुए नजर आएंगे. हेलो 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 फाइनल सेट. So we're just commencing. We see Abhilasha with a change of t-shirt, serving to Nancy Malik in the third set. Oh, that's a lovely serve. 15 love. Very well played. थोड़ा सा मैं सुधारना करना चाहूँगा कि 10 पॉइंटर जो रखा गया है वो केवल डबल्स में रखा गया है, तो ये तीसरा सेट निर्णायक सेट इस समय खेला जाएगा. 15 love. Pandit Ravishankar Shukla University. Players name Ruchita Saw versus Urvashi Banjari. बहुत फ्रेश मूड में नजर आ रही है इस समय भी अभिलाषा. पहला पॉइंट जीती है सर्व में, which is very good. Chair umpire Shraddha. सेल्फ फोर्स एरर वहाँ पर नैन्सी द्वारा, और वापसी अच्छी की है यहाँ पर अभिलाषा ने. 30 लव. थोड़ा संकल्प अब थोड़ा सा मजबूत नजर आ रहा है. क्या हिदायतें दी, क्या खुराक उन्हें दी उनके कोच ने, समय के साथ साथ हम यहाँ जान पाएंगे. और यहाँ पर लगातार गलतियाँ नैन्सी द्वारा हुई है, और उसका फायदा मिला है कि स्कोर इस समय 40 लव पे पहुंचा. बहुत जल्दी ये 3 अंक उन्होंने बटोरे हैं अपने लिए. It is very important for Abhilasha to win a service game. That will give her added confidence. And I think then thereafter she should be playing a much better game than what she is capable of. बहुत ही अच्छी तरह से नेट पर उलझाया वहाँ पर नैन्सी को, और 40 लव यानी लव से वो गेम उन्होंने जीता है. अच्छी वापसी तीसरे इस सेट में 1-0 की बढ़त हासिल की है. तो क्या ऐसी बात हो जाती है कि कोच ऐसे क्या खुराक पिला देते हैं, ऐसी क्या टॉनिक दे देते हैं, क्या हिदायत देते हैं, क्या मंत्रणा दे देते हैं वहाँ पर दुष्यंत की खिलाड़ी अचानक बदलता हुआ खिलाड़ी एक बदला हुआ खिलाड़ी नजर आने लगता है. देखिए किस तरह से उन्होंने इस खेल में खेला, और कोई टस से मस करने की वहाँ पर कोई गुंजाइश ही नहीं रखी नैन्सी के लिए, और 40 लव से वो गेम उन्होंने जीता. ये सब एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर होता है. कोई कोचेज ऐसे बोलते हैं कि जब कोई प्लेयर अपनी मिस्टेक से गेम देता है, तो कोच एक ही बात बोलता है कि अगर आपको गेम देना ही है तो आप शेक हैंड्स ही कर लो, खेल क्यों रहे हो. तो उससे थोड़ा सा मानसिक प्रभाव पड़ता है प्लेयर पे, एंड उस पर तो इट्स अ ह्यूज साइकोलॉजिकल टॉक. बेसिकली अ कोच कैन मोटिवेट एट दिस लेवल, ही कांट एक्चुअली कोच. कोच का काम केवल सलाह देना, मंत्रणा देना, जो आपकी कमियां हैं उसे निखारना, उसे सुधारना ही होता है, लेकिन प्रदर्शन करने का काम तो आपके ही कंधों पे होता है. लेकिन देखना कि जो वापसी किए यहाँ पर
अभिलाषा ने अच्छी वापसी उनकी फिलहाल जो बढ़त हासिल है इस समय पक्ष में। लो 15 तीसरे सेट का पहला गेम वहां पर जीता है नैन्सी ने, अभिलाषा ने जीता है और निश्चित रूप से यहाँ फिर गलती, फॉल्ट और नतीजा निकला कि स्कोर इस समय लो 30। गलतियां लगातार नैन्सी के द्वारा उनके संतुलन खोया है, मानो कुछ अलग सी बात यहाँ पर नैन्सी के द्वारा हुई है। लगातार अंक एक के बाद एक उन्होंने दिया है और लो 40 पर स्कोर इस समय। और ये लगातार की गलतियां मैं समझता हूँ कि एक अच्छे खेल खेलने के बाद, एक अच्छा सेट जीतने के बाद आप इस तरह से गिव अप नहीं कर सकते। और यहाँ पर मौका मिला है और देखना है कि वापस कर पाती या नहीं, लेकिन किया है और नेट के पास आकर वहाँ पर हल्के से क्रॉस कोर्ट खेलकर अंक लिया और गेम अपने नाम किया वहाँ पर अभिलाषा ने। तो एक के बाद ये दूसरा गेम, यानी ब्रेक पॉइंट उनका, क्योंकि सर्विस ब्रेक की है उन्होंने वहाँ पर नैन्सी की, तो ब्रेक पॉइंट अगर आपको मिलता है तो अतिरिक्त लाभ आपके पक्ष में होता है। तो अभिलाषा इस तीसरे निर्णायक सेट में 2-0 की बढ़त के साथ आगे। स्वागत नवीन शौरी। Thank you, Mahesh. What a lovely second set. I was expecting that Abhilasha will seal it, but Nancy, take all that credit away from Abhilasha and give it back to Nancy. The way she has come back into this match is just unbelievable. And she's made Abhilasha spread it out and change her jersey, and being near to the net, you can score points, but then sometimes this also can happen. Very nicely done by Abhilasha. It's 15 love now into her favor, and she wants to seal this completely. With the game difference of 2, it becomes very tough when you have an equalizer at 4. That's what happened in the second set. 15 all. Gives away a point on that forehand return. 15 all. Ramesh, what was very interesting is where Nancy held her nerves, did not allow Abhilasha's dominance to take over. बिल्कुल, दूसरे गेम में, दूसरे सेट में तो काफ़ी अच्छा प्रदर्शन उनका रहा, लेकिन पिछले 2 गेम जो उन्होंने खेले ना, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि वो जो दूसरे सेट में खेलने वाली थी नैन्सी, वो नज़र नहीं आई। लेकिन क्या वापसी, एक अच्छी खिलाड़ी हैं, कभी भी वापसी कर सकती हैं। और या फिर देखिए जो खेलने की कोशिश की थी, ऐसा लगा कि शायद बाहर खेल गई। Yeah, it felt like it went out. देखना है कि क्या यहाँ पर अंक मिलते हैं नहीं, लेकिन साफ नज़र आया था स्क्रीन पे और उलझती हुई वहाँ पर नेट पर 15 और होता हुआ स्कोर। तो वापसी करने का जो मौका है, प्रयत्न यहाँ पर नैन्सी द्वारा जारी है, लेकिन सर्व इस समय चलती हुई 30-15। I think slowly, the Ministry of Youth Affairs, of course, initiating this fabulous Khelo India University Games along with the Association of Indian Universities. And when it comes to lifting the standards up, I think the responsible stakeholders and authorities should probably introduce a review as well for tennis, as we have in the other standards and formats. 15-40. That backhand does not work well. So when you have that review sort of a system, you will need to know that whatever we saw in the screen, it just looked as if it was going out, and the line umpire did not call it. And if it was Nancy who was having a review, she could have taken it and she could have actually, given away that important point. And see, now Nancy has won that set because of that review. If Abhilasha had that review, she could have come back into that game and sealed that game. It could have been 3-0. बिल्कुल, और जो साफ है यहाँ पर नजर आया, कम से कम हमारे डीडी स्पोर्ट्स के जो कैमरामैन है, मेरे बिल्कुल नज़दीकी पैनी नज़र उनकी घूमती रहती है कैमरा के साथ साथ, और वहाँ नज़र आया कि गेंद आउट गई है, लेकिन न जाने क्यों अंपायर्स ने भी नहीं देखा और लाइन अंपायर्स जो बैठे हुए हैं, लाइनमैन्स बैठे हैं, उन्होंने भी नहीं देखा, या हमें कुछ गलत फहमी। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, आपने जो देखा वो मैंने देखा, मैं भी आउट कह रहा था, आप भी आउट कह रहे थे, लेकिन जो रिव्यू सिस्टम नहीं है तो शायद खिलाड़ियों ने नोट किया कि नहीं, ये अलग बात है। Absolutely. I think even in this high moments, we will see one of that ball maybe. Just watch this. And these are all the pointers that has been given away. I think here, this one, I think it was a forehand that was returned from Nancy.
we both felt it went out. Time. So, I think it's a small little error that has given away a game to Nancy. 2-1 की बढ़त इस समय तीसरे सेट में अभिलाषा के पक्ष में, लेकिन इस तरह की जो छोटी मोटी जो पॉइंट्स होते हैं, एक एक पॉइंट भी काफ़ी महत्वपूर्ण लगता है, क्योंकि वहाँ पर मौका मिलता है खिलाड़ी को नए सिरे से एक नए गेम को शुरुआत करना. ये है रोहित जो कि पहरेदारी कर रहे हैं इस मुकाबले की. Yeah, and of course, Mahesh, there is 5 more other courts. We are showing the court number 4. This is the show court, but 5 other courts alongside where all the matches are happening. And I was just when I was on the break, stepping out, I was witnessing a stupendous, spectacular, scintillating match. Whatever superlative terms you want to use, you can use it, because it was Shravya from Jain University, Bengaluru. She beat her opponent 6-0, 6-1. क्या बात है? Can you believe it? I mean, I was shocked. And she's played a lot of tournaments outside India, especially in the US. She's played multi-dollar tournaments. Shravya, of course, Jain University prodigy, Jain University Bengaluru, where the previous Khelo India University Games occurred in Kanakpura, Bengaluru. And I was just stunned, just completely stunned. 6-0, 6-1. Just imagine her opponent's condition. कितना दबाव और कितना खौफ उन्होंने पैदा किया होगा उस खिलाड़ी के ऊपर कि 6-0 और 6-1 से आप वो सेट जीत जाते हैं. तो ये सारे चीज़ें हैं. यहाँ पर कुछ नौसिखिए भी खिलाड़ी होते हैं, कुछ धूप में ठंडी में तप के सुधर कर आए हुए खिलाड़ी भी होते हैं जो अच्छा खेल करते हैं. यही तो होना चाहिए. खेलो इंडिया का जो माध्यम है वो यही तो प्लेटफॉर्म है कि एक नए टैलेंट को आप ढूंढ रहे हो और उस टैलेंट को यहाँ पर आप निखार सकते हैं, देख सकते हैं, उन्हें आगे ले जा सकते हैं. तो फिलहाल इस गेम में जहाँ लौट रहे हैं हम लोग कि ये इस तीसरे सेट में इस गेम में कम से कम 15 ऑल होता हुआ स्कोर. Yeah. Now the winner of this match, of course, we will speak to them, but we'll try and pull in Shravya as well to for a small chat. It'll be really great. I want to really know why that sort of a dominance. What was the reason behind that sort of a dominance? And the other players watching Shravya from Jain University can take a big leaf out of her book, as this game once again is just tilting towards Nancy. And if this is another point, it's going to be 2-all. And Abhilasha will once again have to make a big U-turn on the comeback. बिल्कुल अच्छी वापसी यहाँ पर नैन्सी द्वारा. जो गलतियाँ उन्होंने की थी इसके पहले के गेम में, उसमें से थोड़ी सी सुधारना उनकी हुई है. पीछे की तरफ ढकेलने की कोशिश में ज़्यादा शक्ति का इस्तेमाल हुआ और गेम जो जीतना चाह रही थी वहाँ पर नैन्सी एक अंक गंवा बैठी और 40-30 होता उसको. The idea was right from Nancy on the high lob. She just put it out nicely towards that direction. And is just having a little more power, just a little more height on the carry. And strong winds today are not a factor of cause. Double fault and the deuce. Now, I think this is the match that we have seen the ultimate number of deuce. I think we've crossed the 10 number is what I feel. We've crossed 10 or 12 numbers very comfortably in the number of deuce. Advantage Kalinga Institute of और Industrial अच्छी वापसी वहाँ Technology. पर अभिलाषा द्वारा. एडवांटेज उनके पक्ष में जाता हुआ. एडवांटेज अगर आपके सर्विस ब्रेक पॉइंट क्या कर सकेंगी वहाँ पर ले सकेंगी इस सर्विस में. और मुश्किल है, काफ़ी ऊपर, काफ़ी दूर, काफ़ी पीछे ले गई, लेकिन मौका बन सकता है यहाँ पर नैन्सी के लिए कि वो यहाँ पर अंक अर्जित करें. नेट पर उलझा दिया और ड्यूज होता हुआ. Yeah, the idea of pulling Nancy in front of the net does not work there for Abhilasha. That was her thought of asking her to come more closer. She has to watch out on the serve now. The advantage will be given away if this is a double fault. Serves it with a lesser pace. Wonderful return on the forehand. Finds the nets. No much rallies, and the advantage is now with Nancy. क्या अच्छा मौका मिला था वहाँ पर, लेकिन थोड़ी सी कहते हैं ना कि जज्बातों में
कंट्रोल करने के लिए इतना वक्त होता नहीं, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आपको खेलना होता है और वहाँ पर आप नेट पे खेल गई। हालांकि बहुत खाली क्षेत्र था बाईं तरफ नैन्सी के, आसानी के साथ वहाँ अंक लिए जा सकते थे, लेकिन हुआ नहीं। एडवांटेज की स्थिति बनी हुई है नैन्सी के लिए, उनके सर पे। More so often double fault now. Throws away the advantage, Nancy. We really need to have a chat with her. She's thrown away the advantage more than 6 times. Of course, on a couple of occasions, the advantage was snatched away from Abhilasha. But throwing away 6 times, she has to really work on that. Brilliant on the backhand from Abhilasha to steal that advantage back. Nice placement. And Nancy couldn't reach that one. बिल्कुल मौका जिसे कहते हैं ना भुनाना, वो उस तरह का खेल वहाँ पर दिखाया, दोनों हाथों से बाईं तरफ खेलकर वहाँ पर अंक लिया था। और फिर गलती कर गई ड्यूस। लगातार एडवांटेज का जो पलड़ा है वो एक दूसरे पाले में जाता रहा है। Yeah, this time Abhilasha threw it away, isn't it? Yeah, just trying to gift each other back. That's faster. And not controlling on that advantage, not capitalizing onto that as well. Advantage. Nice rallies, but then it was out from Abhilasha. Just tried to place it a little more wider, and whenever she's tried to do this, Mahesh, she's forced that error onto herself. बिल्कुल, और ये बाहर खेल गई थी और इसी की वजह से एडवांटेज की स्थिति बनी है और सर्विस कम से कम अपने बचाने में कामयाबी हासिल कर पाती है नहीं, देखना होगा यहाँ पर नैन्सी के लिए। हालांकि एडवांटेज की स्थिति 5 बार हो चुका है कि दोनों तरफ बदलती हुई नज़र आई है और यहाँ पर थोड़ा सा संतुलन किया, कंट्रोल किया अपने आप को और फिर यहाँ पर ये नो शी थ्रोन इट अवे। बिल्कुल, और यहाँ पर फिर वो एडवांटेज की स्थिति ड्यूस यानी कहते हैं उसे, उस स्थिति पे आ चुकी है। छठवीं बार हो रहा है। Yeah, in this game. But in the first set we saw so many deuce. That magical number of 40 which the players needs to cross. It's 40 all, we don't say that, we say it's deuce, and they'll have to score 2 points onto that occasion. Won the advantage, and now the advantage is with Abhilasha. Right, Abhilasha Bista. She would have never thought that the comeback would be so strong from Nancy. ये आखिरी एडवांटेज होगा मेरे ख्याल से। आप फिनिश करना चाहेंगे अभिलाषा? Are you sure? बिल्कुल, जो निर्धार दिख रहा है उनके हथेलियां मींजने के बाद, वो शायद यही दिखा रहा है कि अब मैं गलती नहीं करूंगी। देखना है। Yes. देखा आपने, मेरा अनुमान सही निकला। जिस तरह से खिलाड़ी, मैं कहता हूँ ना कि अपने आप से जो बात करता है, संकल्प करता है, इच्छा प्रबल अपने आप को मजबूत करता है, वो वहाँ पर थोड़ा सा नजर आया और वही फायदा वहाँ पर मिला अभिलाषा को और तुरंत उन्होंने उसे कन्वर्ट कर दिया। मैंने कहा ना ये आखिरी बार है एडवांटेज और उन्होंने कन्वर्ट किया, अंक लिया। 3-1 की बढ़त इस समय अभिलाषा। Okay, Mahesh, out of 10 times, you know, couple of times, yes, we get our gut feeling right. Nice. No, but that was a good return, I should tell you that, from Abhilasha, where she placed it wider of Nancy and she couldn't get under the ball. More than the gut feel, it's all on the skills and talent of the player as well. We are just trying to have some fun in the commentary box, but the real thing is the talent of the player. बिल्कुल बिल्कुल, उनकी योग्यता को कम लिखा नहीं जा सकता। बहुत मेहनत करनी पड़ती है खिलाड़ी को। दिखता आसान है, लेकिन कोर्ट में जाकर आप देखिए, इस छोर से उस छोर पे गेंद को मारने की कोशिश करिए, कितनी ताकत लगती है। शोल्डर में कितनी खिंचाव आता है, कितनी ताकत का इस्तेमाल करना पड़ता है, कितना भागना पड़ता है, दौड़ लगाना पड़ता है और आंखों का और बॉल का कॉन्टैक्ट आपको रखना पड़ता है। तो आई बॉल कॉन्टैक्ट भी रखना पड़ता है। फिलहाल स्कोर यहाँ पर 15 love. After that point, it's 30 love. Yeah, 30 love. Where that return from Nancy was wider outside there. That was a good placement from that forehand. There we go. Brilliant one. And she knew it. The moment she hit it, she knew it. It's not that comfortable position there for Nancy. Couple of more games and she'll seal it. Abhilasha, she wouldn't have expected this to go to the third set even, especially after that first set's comfortable victory of 6-3. 40-15. Yeah, she's draining her out, isn't it? She's just completely draining Nancy out, Abhilasha. 40-15 now.
Oh, we're just expecting that she will seal this game. It becomes 40-30. अभिलाषा कह रही है कुछ जल्दबाजी क्या है, एक एक गेम एक एक सेट हम लोग जीता है, तीसरे सेट में खेलने दो जी भर के, क्योंकि जॉइंट्स में डबल्स में हमें फिर खेलना है, तो थोड़ी सी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और यहाँ पर खेलने की कोशिश दाहिने तरफ की थी और यहाँ पर गलती कर ली, और इसके साथ ये 4-1 की बढ़त यहाँ पर हासिल कर ली है अभिलाषा ने। अच्छी वापसी उनकी, और उसके साथ मैं समझता हूँ कि ये खेल जो है एक एक गेम जीतने के बाद, पहला गेम वहाँ पर अभिलाषा ने जीता था 6-3 से, दूसरा गेम उन्होंने दूसरा सेट 7-5 से उन्होंने गंवाया, लेकिन तीसरे सेट में एक मजबूत इरादों के साथ उन्होंने वापसी की है। 4 के मुकाबले 1 गेम की बढ़त उनके पास मौजूद है। That's very interesting now how this coming up game and even 2 games consecutively will be played by Abhilasha, because she does not have any other go apart from playing it nicely. Yeah, Jaimin Mehta, that is what he will be telling her, as Mahesh takes a little bit of a break and walks out, as been joined by Dushan Singh. Fabulous second set, isn't it? Yeah, Naveen, great game. 1 set all. Abhilasha leading 4-1. It's taken Abhilasha has definitely picked it up, but you can see on the screen that Nancy is definitely tiring out with a. Yeah, along with the tiresome factor, it's also has to be said that how Abhilasha is holding her position and holding her thoughts together, because she's not trying to be over aggressive, she's not trying to dominate the game completely, because she knows that she's against a very formidable opponent. It's not that stamping authority that she can barge on, and that shows in a way of play, because you just see wherever the smashes have gone in, wherever the strong cross courts have gone in, it's not been too dominant, it's just proper thinking as we've begun this game. She's come in the front now. We've always seen her get the points when she's near the net, Nancy, isn't it? If you notice, Naveen, Nancy is not hunching when she's stroking. She's body structure is just straight, which will definitely affect her stroke play. And if she works on that, her game can really improve. Oh, good return. Very good return. Oh, that was a nice slice, but not from the baseline, Dushan, isn't it? She had to come a little nearer to the net. No, I just thought that she just did not. Just see the body language. Just see the body language. Why? There. I think she's contesting that the ball was out. That's what I personally feel. Oh, yeah, that brings us back to that conversation of reviews. Yes. It had to be one. She's had a chance to smash it. Does it brilliantly well. That's it. Love 40 now. But we can't have that review policy here, because I believe the technology for that is quite expensive. Naveen, I don't know, is that true? Yeah, generally, because whatever I've done, I've played in cricket and done a lot of broadcast in cricket. Yes, that's it. That's the game. 5-1 now in favor of Abhilasha. Wonderful work. She does not allow a single point in this game to Nancy, and now it will be more or less Abhilasha's game. Yeah, coming back to that cost factor. Yes, it is a bit of a little of a costly affair, but again, you look at cost, there's so many other things that the younger prodigy will need to contain with. Of course, give them that scope, at least for the finals, maybe the you know, where you have that sort of at least a measure of how to take and when to take. Even that is called training, isn't it? Yeah, the first point just being played, going in favor of Nancy Malik, leading love 15. But, you know, Naveen, I don't see it very long where all these things will come. Evolution does not stop. And today, mankind is just stepping from one level to another as far innovation and technology is concerned. Oh, yeah. Slowly but surely. Yeah, let's hope for the best. As
Let's not write it off because anything is possible. Nice placement. Abhilasha had her brilliant self. Took it on the half volley there and just placed it towards the backhand of Nancy. 15 all. Whatever games I've seen of Abhilasha, she lost all her service games. I hope she can win this game. Ball le lo. Oh, that's a nice stroke making. Le lo She's ball. got nice hands. Yeah, most of the service games that she's lost is because of Nancy's brilliance. Didn't throw it away, but what I'm not really impressed with Nancy is she's thrown away a lot of advantages. Yeah, there again, return not nice on that backhand. Right, throwing away advantages. I mean, if I remember clearly, it's more than 6 to 7 times Nancy's thrown it away. But she's playing within the limitations. She's stretched the match. Let's see, but she won't give up that easily. That's a beautiful lob on the backhand. Oh, that's a nice return on the forehand. Sorry all. Just a weak shot by Nancy, which gave advantage to Abhilasha. You see that? I like her footwork. She's very supple and she's ready to go for a lot of talent. In this girl. No doubt about it. 40-30. Abhilasha Bista from Nepal is just 1 point away in sealing this game and sealing the match as well. This is what she would have really loved to do in the second set. Yeah, service game for her. Game set Has to match. seal it. Kalinga Does it. Institute of Industrial Fabulous Technology. job. 6-3, By 2 sets to 1. 7-5 and 6-3. 6-1 in favor of 5-7, Abhilasha. Good match 6-1. victory. Yeah, that was a great game. 2 sets to 1. Score being 3-6, 7-5, 6-1. Well contested match. Went to the wire. In the third set, I just felt Nancy could have done a bit more. But and there you see the players and the coaches greeting. And that's the way it should be. So very well contested match. Now I have with me with my fellow commentator, Mr. Mahesh Tiwari with us. The second match would be being played very shortly. And there you can see the players and the coaches shaking hands. And we would be commencing with the second match very shortly. And you get to see the beautiful view of the court, which is beautifully done. Abhilasha from Kalinga University winning the first match against Nancy Malik of Dayanand University. वुमेन सिंगल का ये जो मुकाबला खेला गया Ready? Check audio, check. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Check audio. What a match from Abhilasha Bista, and she's made herself
making sure that she announces herself after that first set victory. It was very good from Nancy to come back into the second one. After that glitch, and I think that was some cracker sound for your victory, Abhilasha. What happened in the second set? 7-5. My God, you allowed Nancy to come back a little. Victory. But nevertheless, what actually happened after the first set victory? 6-3, it was comfortable. We never thought it was going to go down so much into the second set. And also coming near the nets and you making sure to make her run near the net was giving you a lot of points. Yeah, I think it was. But in the second set, I think I started making few errors while attacking. But then later I started playing with more margins and I started making more points. Lovely. And also from Kalinga University as well. You're representing Kalinga University, but you're from Nepal. That is really nice to see and nice to hear. You're representing Kalinga University in India. How has it been, the transfer into the university? How much of the advantage the university is giving you to come in on the immigration and everything? How is this taken through with that? Being from Nepal and playing this tournament is a huge thing for me. And playing for my university, playing many matches, getting to play so many university tournaments with these team events and this support is just amazing. And I think our university has given so many opportunities for me as well. Lovely. And also a few words about your coach, Jaimin Mehta. I think he was there motivating you, sitting next to you as well. Yeah, even during my low moments, he was helping me come back. And then he was motivating me in every point. Lovely. All the very best. I'm sure you'll be getting ready for the doubles as well, yeah? Yeah. All the very best for that. Thank you. Nice game. So that was Abhilasha Bista of Nepal. Thanks a lot. And we have another wonderful superstar, I should say. She's from Jain University, Bengaluru. Shravya is her name. And, unfortunately, we did not have her match on the show code. Shravya is because 6-love, 6-1. And she nailed it. I mean, she just dominated her opponent. Did you your opponent first? Actually, she's a good friend of mine. I've known her for years, but I think because I see her so much on the tour, I had a proper game plan going in. And I just wanted to focus and make her play as many backhands as I could. So, giving away my secrets, but that was the game plan, yeah. Oh, fab. No, you spoke about you've seen her in a lot of tours. But Shravya, please take us through what you have done, how many tours you've been. I've heard that you've gone to the US for different stuffs, for studying or to practice or to play. So I play the International Tennis Tour. I'm currently ranked top 10 in the country, both singles and doubles. Do what I can. I've represented India in the South Asian Games. We won a gold medal in the team event and I won a singles in the doubles event. So doubles is usually my forte, but I'm doing decently well in singles as well. Wow, fabulous. Of course, you will be getting ready to play the doubles for Jain University. And of course, being in Bengaluru, being a Telugu girl, proud Telugu girl, game ante memo meer cheppali kada adrindi court adrindi ikkada ma'am, but we really missed showing it live, but lovely to chat with you as well. How much of Kannada have you learnt? Bengaluru ಅಷ್ಟು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. But what is the plan on the doubles? Who's going to be your partner? We're going to see, depending on how the second match goes. If we're 2-love up, we will play a different team. We want to see some different combinations going into the tournament because we're seated in our pool. Ideally, we want to do the best we can. Fingers crossed, and we'll see how it goes. Superb. And Shravya, before I let you go, the one thing that I really wanted you to come in and talk is to give kind of a pathway to all the Khelo India participants who are here. Because you've gone to that level, you've seen the road, the nicer way, and maybe the tougher way also. But what has to be done? Like say we saw Abhilasha, now we'll be seeing Rutuparna Chaudhary. There's a lot of other talents that's coming in from Khelo India University Games. How should they make? At least, they go on your path. I mean, I'm not at the highest level yet, ideally, but I think to say the least, I think the basics are discipline, hard work, consistency. Those are the usual things. But I'd say more than anything else, you should make sure that you're enjoying the sport and you're having as much fun as you can on court because you will last longer if you're having more fun, just like anything else in life. But I think it's a tough grind, and I think the most important thing is to make sure you stay injury free and fit and just
hang in there, I guess. Yeah, fabulous. And also training in the foreign land, going out there makes a big impact. It does. I was with Rohan Bopana for the longest of times, and I've learned tons. I train in Hyderabad now with Suresh Krishna, but I think it's just been a fabulous experience altogether. Wow, all the very best for your future, Shravya. Wonderful superstar that we have here. You with the next singles that's going to happen here.